like this happened in Hindi. I'll just tell this in Hindi. We have this scene here कि गाड़ी तेरा भाई चलाएगा. So there was this plane and Randy Rhoads was a bit high, I guess. I don't know. He was tripping on something. Not a plane, a small charter plane, 8-seater. 8-seater. So now what happened is, actually he only used me the word गाड़ी तेरा भाई चलाएगा. So Randy, and sometimes when the guy is drunk or something, he's not. तो ले तू जाके आ, मैं बाद में आता हूँ. So thankfully, Ozzy Osbourne said, "I'm gonna go home. I'm tired or something, whatever." And Randy Rhoads said, "Okay, I'm gonna take the plane." He took the plane and he crashed in somebody's mansion. I'm so sorry, I shouldn't be laughing at this. The world lost a very good guitarist. Oh man, he died. He died. Yeah. Oh man. But luckily, Ozzy Osbourne is But still he didn't alive. knew to fly a plane. He knew to fly a plane. You don't fly a plane if you don't know it, dude. So he just took a round and it was all well till then. He took a second round, then he lost control and then he dipped into a house. Yeah. Insane. Slash sometimes he's so drunk he couldn't stand. मतलब वो लड़खड़ा था स्टेज पे. वो लेकिन नोट सही बजाता है. वो कॉन्सर्ट पूरा किया है उसने ऐसा. Wasted. See, these people, there were artists whose hairs were set on fire. James Hetfield from Metallica, when he was playing for this, I think it was in Canada, right? Montreal, Canada, So what happened is, pyrotechnics like fires निकलते ना, तो क्या हुआ? एक pyrotechnic के ना, एक pyrotechnic क्या malfunction हो गया. Yes. जब उसको light होना था तब नहीं हुआ. उसके थोड़ी देर बाद हुआ, तो वो वहाँ step कर दिया, उसका पूरा एक side जल गया. Oh, and still he was. Yeah, he played. Yeah, then he was taken to hospital. थियरी की बहुत सारे ऐसे डेथ मेटल वाले वो लाइव ऐसा ब्लड कंज्यूम करते हैं, ऐसा इज इट ट्रू और नॉट? So hello guys, welcome to the new episode of the MINDMIX podcast, and today as a guest we have Mr. James Noronha and Mr. Shadique Vasaya. So how are you? I'm fine. You let me know how you doing? I'm all good. कैसे हो सादिक भाई? I'm fine, still rocking. Still okay. आपके लॉन्ग हेयर्स एंड ऑल वो सब कहाँ गए? हाँ, वो एक्चुअली मेरी बचपन से ख्वाहिश थी लंबे बाल करने की. 2020 में वो पूरी हो गई कोविड टाइम्स पे. ग्रेट. तो लास्ट ईयर मैंने कटवा दिया. एंड आपके पास तो है. ग्रेट. It's an interesting story actually, but it's not really related to rock, but it's related to a rebellious scene in life, which I would not mention here. No worries. So James bhai, tell me about yourself. It's not much to tell. It's a very small town I've been born and brought up in. It's Silvassa. So you know me personally anyways, Yes. Just for the crowd, I'm currently an educator in a reputed school. But that is basically, because I like to teach and preach. But other than that, once the day is officially over, I'm into music, either listening to it or playing it or teaching it. Great. How about you, Shadique bhai? Currently I'm self-employed और पार्ट टाइम स्टूडेंट ऑफ जिम सर. जब भी टाइम मिलता है आई विश मैं पहले ज्वाइन कर सकता था इनकी एकेडमी को, तो कुछ ज़्यादा सीख लेता था लाइफ में. It's never too late. Yeah. It's never too late. Great. What is vintage music? What is vintage vibes band? Vintage vibes music actually, started all of a sudden, to be honest. Like, when I was in college, I started to work as a DJ. Even that happened all of a sudden. One of the guys I used to just play with. What happened is, one fine day I gave him an advice. There was a particular program. I told him, start a song dedication session. Charge people the money and dedicate the song, announce their name. So he told me, James, why don't you do it? I did that. And then I started playing for him. That's where I started my career as a DJ. Okay. And used to listen to a lot of music, a lot of official commercial versions. For example, there's this artist called Swedish House Mafia. Don't You Worry Child is a very good song. Somehow I had this inclination towards the guitar. So I used to find unplugged versions of it, acoustic versions. Okay. And I came across that, and gradually all those commercial EDM songs. music. Yes. Okay, all those great, commercial interesting. songs. And then I developed my likeness towards this particular unplugged music. And initially what happened is it was quite late, when I was in the last year of my master's degree. That's where I got the acoustic guitar. My grandmother gifted me a guitar, and that's where it all started. And then the immediate year, next year, I joined a school. And what happened is I was taking some tuitions. So the guys who came to me for tuitions, they suddenly saw a guitar and said, "Sir, could you please teach guitar?" I said, "Fine." And that's
where I started with 2 students, and today I guess Vintage Vibes, it's not a very big thing, but well-known people, music well-known. At least academy in it's a Silvassa. place now where anybody can come in, regardless of your age, your profession, regardless of who you are, what you have done, and just come, learn, and play. Even if you don't want to learn, I always tell people you don't have to join the academy. Yes. You come, you sit, listen to music, chill. It's a Just wonderful enjoy. place. Yeah. In short, I just enjoy. recommend you visit the place. You know how you feel. You've been there. You know how you अरे feel. Right? मैं मेरा सब पालन पोषण उधर ही हुआ है ग्रेट सो स्पेसिफिकली आई वांट टू आस्क कि आपने बोला कि हाउ यू स्टार्टेड विंटेज म्यूजिक एंड बैंड एंड एकेडमी बट व्हाट गेट यू इनटू द रॉक म्यूजिक Rock And music. same question goes to you, Sadik bhai. Yes. So I'd actually prefer he answers this first. ओके It's a long story, but let's cut it short. Like your hair. Yeah. Like your when I was in 8th standard, probably I remember. 8th standard? 8th standard, yeah. Oh. कौन से साल की बात 1994. 1994 1995. So first time I heard Metallica. Metallica great So by then I used to hear rock bands like Eagles, Michael and Rock. classic rock Yeah, classic rock. The lighter versions of it. The soft rock. But when I heard this band Metallica, they were like it blew my mind. तोड़ फोड़ Yeah, एकदम it blew heavy my mind. They were so heavy, and suddenly I developed a taste, and so after that it started continuing. एंड वो अब तक छूटा ही अब नहीं तक चल रहा है. वो ग्रो 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 अब ग्रो तक चल रहा है और अभी और एनहेंस हो रहा है. And the funny thing is, वो band भी अभी तक चल रहा है. It's been 40 years. They're still on stage. मेटालिका यस More यस than यस 40 years. लास्ट ईयर ही वो लोग टूरिंग कर रहे थे ना आई They're गेस still touring. Yeah, they're still, I don't know how. ये but ईयर they're भी still टूर कर touring. रहे हो वो लोग ग्रेट still touring. चलो ग्रेट ग्रेट In व्हाट fact, अबाउट हाँ 2011 they came to India, or I was lucky enough. मैं हाँ, गया हाँ. था concert To में. attend हाउ वाज द them. एक्सपीरियंस Fabulous. 1 lakh people. 1 लाख पीपल कहाँ पे हुआ था ये बैंगलोर में हुआ. बैंगलोर में पैलेस ग्राउंड. हाँ बैंगलोर में रॉक म्यूजिक का सीन बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है बिकॉज आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम बैंगलोर, तो वहाँ पे बहुत सारे रॉक बैंड्स ऑलरेडी आ चुके हैं, और वहाँ पे रॉक कल्चर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्लरिश था वो टाइम पे वो टाइम पे सिंस बिगनिंग ऐसा. तो उधर जब आप कॉलेज में गए तो उसको आपको वो एक हाँ, और uplift एक हुआ. बड़ा पुश मिल गया uplift हुआ वहाँ पे. यस और वहाँ ग्रेट पे क्या हर एक कॉलेज में फेस्ट होते हैं, रॉक फेस्ट होते हैं, तो अपने अपने बैंड्स होते हैं, और एक अच्छा एक माहौल माहौल हमेशा रहता है वहाँ यस There is यस a concept called opening. Now, when any big band is about to come and be a part of this a big event, there are many local bands, college bands. They come and they become openers. So there's a lineup of say 5 to 6 bands who play for half an hour, 1 hour. So because people they come in and actually he'll tell you the real struggle. It's like how many hours did you have to stand over there in line to get the ticket and to get inside? Yeah, I was there from 10 in the morning Till? till 1 in the night. Oh. Almost more than 15 hours. Yeah. Yeah, that happens. We stood there. There was no sitting arrangement. Yeah. And it rained heavily. oh during the man concert. The puddle of mud. man. Yeah. It was an experience. And I guess you also censored. Do you need to make arrangements to pee, or you can do that in your Are you sure you have to carry bottle with you? It was not a tidy job. But then we had to manage. Yeah. You are not proud of it जो भी हुआ उस दिन वो वहीं पे रह गया वो एक्सपीरियंस आप वहीं पे छोड़ के आ It was गए an overcrowded place, and It was like Woodstock. yeah, kind of Woodstock. वुडस्टॉक आप बता दो वुडस्टॉक क्या है Woodstock is a festival that is organized in USA. Woodstock is a place where legendary bands like Jimi Hendrix, जो लेफ्ट हैंड Yeah. से गिटार बजाते थे they are master of guitars. तो वहाँ पे अभी भी होते हैं. Every year नए नए बैंड्स आते हैं और पुराने बैंड्स भी परफॉर्म करते हैं. तो वुडस्टॉक में एक फेस्ट ऑर्गेनाइज होता है. वहाँ पे मतलब कोई नॉर्म्स नहीं होता है ऐसा. एक खुले मैदान में अच्छे से कॉन्सर्ट होते हैं, एकदम जैसे अभी अपने नॉर्थ ईस्ट में होते हैं, मणिपुर वगैरह में, अरुणाचल वगैरह में जो टेंट्स एंड ऑल का पूरा कल्चर रहता है प्रॉपर हाँ बेसिकली रॉ कॉन्सर्ट्स होते हैं. हाँ तो वो अभी भी वहाँ पे चल रहे हैं. great James sir how do you get into rock music Till 2018, I was not exactly into the scene of rock music. Now, what has happened is, when I got the guitar, I was just struggling to learn chords. What mostly every beginner does, go to YouTube and learn chords. When I got the heck of a few chords, thanks to a friend of mine. His name is David. He taught me like the first chord. He gave me a chart. let me आपका फर्स्ट chord था D It was a D major, correct? He gave me a chord chart, and I just played that. And in a couple of days, I just started learning the chords.
But gradually I wasn't satisfied with that. What happened is, to be honest, with all due respect, Bollywood artists are really good, and I listen to them even today. I started playing a lot of Bollywood songs on like 4 basic chord progressions, and people YouTube stuff, one chord, 10 no, songs. not exactly वाला से. one chord, but मतलब, हाँ, similar to I'm a that. bit geeky in that case. What happens is, if I want to play a particular song, I don't just anticipate the chords. I rather I either listen to it or Google up the entire data, and I try and play along with the song, because I like the song to be completely perfect. Like it should sound technically good, because that is my forte as an educator even today. Probably that is what made me an educator into especially into music education, because I like songs to be detailed. Now what happened is, one fine day I was listening to some unplugged stuff and all, and I came across this particular band called Guns N' Roses. Guns N' A Roses. very, very, very legendary band, and Indeed. the reason I spent a lot of money, I ended up buying a lot of guitars by mistake, is because of this, one particular song called Sweet Child of Mine. Okay. Now, the funny thing is, the band themselves did not like the song. Interesting story is that, one day this guy, Saul Hudson, whose stage name is Slash, the lead guitarist for Guns N' Roses, the one with the top hat. Man with the hat. Yeah, there's a story man with the actually, hat. the man with the hat, the story is that he stole the hat actually from a store. Okay. Yeah, that's what I've heard in their interviews. And this song came in, and somebody had just given me one of the electric guitars, a very basic Gibson electric guitar. Gibson. Gibson. Yeah, made in Kolkata, not the original Gibson. Gibsons. Yeah. So what happened is, I had a small processor. Even that was given by somebody. I don't know how. It was all destined to happen. It was with me, and I just tried using it. So what I did is, I knew chords. And I used to play acoustic chords and stuff, and then I got into this. I just put the distortion pass. It's like a sample which gives you a little heavy rock feeling. Yeah. So I did that, and I started playing chords along with the song, and that song hit me hard. Somehow, probably because I was hearing like distortion for a very long time now, and approximately, I'm not lying on this, but probably 1,000 to 1,500 times is somewhat I heard this in a month, walking, going in my car, going on the bike. खाते पीते सोते जागते. Exactly. Repeat, loop mode. I would like to add up. Yes. जेम्स सर का एक शो चल रहा था, एक इवेंट कर रहे थे वो लोग. Yes. So we didn't knew. I didn't knew James sir. और I just we were having tea coffee Just before the lockdown. in the evening, and suddenly they started playing Guns N' Roses. And you were like, I was like, In Silvassa में क्या हो रहा है? Silvassa, in Silvassa, Silvassa में Guns N' Roses सुनते नहीं हैं लोग. He's playing, and then I went and मैं स्टेज पे गया सीधा बात करने के लिए ऐसा. बाय जैसे सॉन्ग खत्म हुआ, आपने बजाया ना. नहीं मैं सुन रहा हूँ ऐसा. प्लीज keep playing ऐसा, keep playing for me ऐसा. I like this song ऐसा, I like this band. So ऐसे मिले हम उनको, और फिर एक के बाद फिर ही टोल्ड में कि आप आइए स्टूडियो पे. तो फिर मैं उसके बाद स्टूडियो पे गया इनका, और आई वाज एस्टोनिश्ड कि सिल्वास जैसी जगह पे इतने छोटे टाउन, इंडस्ट्रियल टाउन में, जहाँ स्टूडेंट्स भी है, ऐसा नहीं है, बट लोगों को टेस्ट डेवलप ही नहीं हुआ. क्यों? बहुत लोगों ने सुना ही नहीं होगा, और कई लोगों ने सुना भी होगा तो आगे उनको पता ही नहीं होगा कि ऐसी कोई एकेडमी है जहाँ पे रॉक एंड रोल की टीचिंग्स होती है थरोली ऐसा. तो फिर मैं उनके वहाँ गया, और अभी भी जा ही रहे. I make a point कि मैं वहाँ पे हफ्ते में 2-3 दिन कुछ भी करके पहुँच जाता हूँ ऐसा. And I admire him as a father also, like because his daughter is also my student. He's motivated his daughter a lot to get into rock music, and recently got her a wonderful Ibanez electric guitar. People who would know guitars would know what Ibanez is. And she's also into rock music. She used to listen to rock inheritance. Yeah, she used to listen to pop, and now she switched to rock. Rock music is like, I'll tell you, when you go to a particular food court, and you try somebody's pani puri, or you try some tapri ka chai, some people have that extra good flavor in the chai or extra good flavor in the pani puri. But like, bhai, yahan jao, yahan ka flavor bahut acha hai. So this is what rock music is. Most people don't know. See, whenever you ask a layman what rock music is very heavy. बहुत कानों में लगता है, माइग्रेन हो जाता है. या लोगों को सर दर्द होता है. या यूजुअली लोगों का मेरा सर दर्द वो रील्स से होता है, बट ठीक है. No offense, guys. Yes. So the thing is, the problem is, see, every culture has to be respected. Every style of music is respected, no doubt. We all respect that as musicians. Now, what happens is, what I've noticed in India, we are more focused on lyrics, right? No doubt, even I'm focused on lyrics, and rock music is mainly meant to open your mind.
not to make you dance. You don't see rockers dancing. You see them headbanging. They Headbanging, do yes. this headbanging. And any part of your body, like mainly your hands, legs, and your head, will be moving if you listen to rock music. Okay. So now what happens is there are rock music has probably, I agree that the people who are into rock music, the people who are playing were not probably very clean guys. They had their own like dark side and bright side, Yes, whatever. But indeed. what has happened is it has helped people. He'll actually tell you something, as to how rock music has helped people connect. Basically, it has started in 70s. Hmm. The rock movement. rock the movement. rock movement started in 70s. फिर 80s में it was on their prime. 90s तक वो it sustained. 2 decades they ruled. Still they play, but उसके बाद फिर pop entry हुई. Pop entry. और फिर various genres अलग अलग आए. वो टाइम बेसिकली ऐसा था रॉक आर्टिस्ट के लिए कि उन लोग को बेसिकली उनके टूर्स बहुत लार्जर देन लाइफ होते थे. बड़े बड़े कॉन्सर्ट. और उनका जो म्यूज़िक है वो ऐसा, आज की डेट का म्यूज़िक कैसा है, हम कंप्यूटर पे बना रहे हैं, माउस क्लिक करके कॉपी करके पेस्ट करके, मतलब वो सैंपल करके और वो सारी चीजें. इट इज ऑन Producers. मेड ऑन कंप्यूटर्स बेसिकली. तो वैसा नहीं था रॉक में. दे यूज्ड टू प्ले लाइव, ओके. तो इट नीड्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस हाँ. और प्रिसीशन चाहिए. एकदम फटे प्रैक्टिस. बीट्स और ये सब का प्रिसीशन चाहिए. और ये लोग प्ले करते हैं. फॉर एग्जांपल मेटालिका का एक शो है मॉस्को में 1991 में. कैन यू गेस द पब्लिक क्राउड? I'm gonna answer this one. You guess it first. What can be the maximum crowd that you find on a live event that is being played by a heavy metal band? लास्ट टाइम आपने मेटालिका इंडिया में 1 लाख बोला है, तो आई विल मॉन्स्टर्स मल्टीप्लाई. ऑफ रॉक करके फेस्ट था हाँ. रशिया में. रशिया में. हाँ, रशिया में. It was in रशिया में. Moscow, yeah. तो फिर आई हैव टू 5 लाख. Okay, you won't believe this. I'm going to do this in the American count. It's 1.6 million people. Yeah. 1.6 Million people. Yes. They had to apply, enforce or deploy whatever. I'm sorry. Army. Yeah, I guess Yeah, army. The crowd was controlled by army. Oh man. So it was such a huge event कि एक कंट्री टॉपल हो सकती है, ऐसा मतलब 1.6 मिलियन लोग एक साथ में ऑल ओवर द वर्ल्ड से फ्लाई करके आ रहे हैं जस्ट टू सी द कॉन्सर्ट. And guess what? The paramilitary force was headbanging to the music. So the Serious? सही में? Yeah, it's I'll surely it's drop you a available on link to YouTube, the yeah. video. You can post it to your. Oh man, So crazy. it was one of its kind. ऐसे shows अभी हुए नहीं है. मैं नहीं बोलता कि उसके बाद आर्टिस्ट आए होंगे और बहुत सारे क्राउड भी आएंगे, बट ये जो एनर्जी थी ना, रॉ एनर्जी, इनका जो टैलेंट है वो मतलब बैंड कौन सा था? मेटालिका. मेटालिका, पेंटेरा, हाँ. 3-4 बैंड थे उसमें, दे टू टुगेदर. बट इनका जो बेसिकली ऑरा है और जो इनकी प्लेइंग है वो इतनी स्पॉन्टेनियस और इतनी लाइव रहती है कि एवरीवन कनेक्ट्स. Agreed. तो ये रॉक एंड रोल का यही एक है कि वो सबके साथ इजीली कनेक्ट होता है. आप अभी भी देखो ना, यूजुअली जैसे नवरात्रि चल रहे हैं, नवरात्रि में अगर बड़े बड़े डीजे पे गरबा लगता है और लाइव होता है. हाँ. तो वो अभी दोनों का डिफरेंस आप खुद yes indeed. Yes, it makes a difference. लाइव म्यूजिक जो प्ले होता है उसकी एनर्जी अलग है. एनर्जी अलग रहती है. वो अलग ही आपको एक अलग थोड़े नोट्स आगे पीछे होते हैं, हाँ, लेकिन बट द एनर्जी कंपेयर टू द म्यूजिक प्लेड ऑन कंप्यूटर्स और प्री रिकॉर्डेड चीजें होती है, उससे बहुत ज्यादा फर्क है उससे. और ये अलग ही हॉराइजन पे उसका एक्सपीरियंस है. True. So music as a therapy. इसको बोलते हैं ना. What happens is like I see these people at times disturbed. To be honest, I'll be upfront when I'm talking about this. There are many people who resort to ways of addiction to various things which are not good for their mind or body, right? Now if you want to vent out, what do? You write your lyrics. Okay, you speak. There are many people who speak and probably people don't understand them. So then it creates a frustration, and people get to very very dangerous ways of venting themselves out or proving themselves that see I was right, but sometimes it's too late. Okay, so rock music helps you to connect in a way, like as he said, the aura. Now as I said, when I listened to that particular song Sweet Child of Mine for the first time, I felt the power chords, the distortion, it was really heavy. It felt good, yeah, bang, that kind of thing. And someday I'll surely probably send you some links you can Sure. your clients. Now there's this legendary singer, the late Chester Bennington. Linkin Park. From Linkin Park, yes. Unfortunately, he ended his life. Had a lot of problems. He had a disturbed childhood. Most of the rock musicians who are top class musicians today and very well renowned throughout the world
they have had a disturbed life, a very disturbed life, and they wrote a lot about their own childhood. Americans, especially. See, you know the history, right? You know the yes. lifestyle. So it's been a very tough time for them, and most of them, they were struggling with themselves. In spite of gaining such a lot of popularity, like worldwide fame, touring, having a lot of money and everything, why would a person put an end to his own life? Probably because even that music was not enough for him. But to be honest, this happens to me even today. In fact, it happened like yesterday. See, I don't know if I should be saying this, but On you. yeah, It's on emotionally it's thoda. a bit mess. My head is a big mess at times. I keep myself stable through music, and what happens is there's an advantage. I am able to help people recover faster. Or the pain is inside here, the happiness is outside. So I listen to Chester Bennington. His music is heavy, like Linkin Park basically, and his lyrics are very relatable. It can make you cry if you have even the slightest resemblance of your life pains to his. Not just him. There are many like that. A very heavy metal band called Disturbed. I would recommend someday. उनका नाम ही Disturb. The name of the band is Disturbed, and there's one song called Down with the Sickness. In this, there's a small part where he becomes very violent and he screams, picturing a child who is facing a lot of abuse, beating and abuse by his mom. Probably stepmom, I don't know, but he says like, I'll be good, don't do this to me, don't hit me, kind of thing. Okay, you should listen to all that, you'll get to know. That is already covered by Pink Floyd. Since 50 years ago. Yeah. In the album Another Brick in the Wall. Another Brick in the Wall. About Legendary about the album. education system. Exactly. We don't need no education. So वहाँ पे क्या फॉरेन कल्चर में इन अमेरिका इन यूके स्टूडेंट्स पे इतना प्रेशर होता था कि दे यूज्ड टू किल देमसेल्व्स और दे यूज्ड टू किल अदर. एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, Yes. बट इतना भी नहीं टॉर्चर होना चाहिए कि बच्चे पे मतलब इतने साइड इफेक्ट्स हो जाए उसके. तो ये सब म्यूजिशियंस ने हेल्प किया है इन अ वे. No, very true. Like for example, you were talking about Linkin Park. So I belong to that generation जो teenage मतलब Gen Z से थोड़ा पहले, ठीक है. You were the guys watching Fast and Furious, I guess, ना? थोड़ा उससे पहले. Okay. हाँ मतलब हाँ बोल सकते हैं. Yes, Fast and Furious. हाँ. Playing Yes, GTA, Vice City. हाँ, I yes, guess, yeah. Vice City. That was the gen. Yes, I belong to that generation. So the thing is कि Linkin Park है ना, like ऐसा we also relate to that. ऐसा मतलब that is the thing that I like about music. कि music जो रहता है वो बहुत ज़्यादा in any form वो of एक music. पर्टिकुलर जनरेशन के लिए बिलोंग नहीं करता, वो See, it is not ट्रांसमिट defined- करता It is है. not defined only to rock music or Yes, metal true. music. Even Bollywood music, even any music, in ghazals, Yes. in qawwalis. I to tell everyone that I'm a ghazal nerd. Every music connects to every soul. True. It is like a कौन सा chord कहाँ पे बज रहा है. कौन से तार कहाँ छिड़ रहे हैं. कहाँ छिड़ रहे हैं, exactly. I'd like to add something. No, so sorry. Yesterday I had my guitar classes on, and my students who have been coming to me, a couple of students who have been coming to me, it's like 4 to 5 months now. So they said, sir, I thought a Bollywood, we'll step to a Bollywood song. I said, okay. And I just asked them, do you know Farhan Akhtar? Like, no. Now, okay, like, maybe people have their own points of view about him. Then I told, have you heard the song Socha Hai? Like, no. I made them hear, they're like, wow. Because it's power chords and it's a song questioning many theories. सोचा है क्या कि ये ऐसा तुमने हो. क्या कभी The lyrics are good, the songwriting is good, but let me remind you, sir, इनका भी कॉपी है. कहाँ से They copied Deep Purple and the legendary bands. सही में 70s, 80s See, के. Most of the music, copy in the sense that the melody riffs, and all the riff riffs, the everything. riffs and the music part. Yes. So कॉपी बहुत सारे they were क्या वो inspired. म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम थे. I don't know if I'm allowed Shankar to. Hassan Loy. I don't know if I'm allowed to, give you the names of the movie and the songs here, because that's a very controversial thing, no? Like some particular series music label might come and just नहीं आप बोलो ना वो it's on us. It's on us. T series. T series, yeah. Many of the songs, good songs, hit Bollywood songs, and they are inspired Yes. from American artists or British You remember artists. Salman Khan's first movie मैंने प्यार किया? हाँ. No, the song मेरे रंग में Elvis रंगने वाली. Presley.
No. There are two songs in the same movie. Huh. You know, there's this "Maine Pyar Kiya" that is inspired by. I'll say that with all due respect, from a song by Stevie Wonder called "I Just Called to Say I Love You." I just called to say I just love you. called to say I love you. It's like that. You go with "Aate Jaate." It's like no New Year's Day. Yeah. And then there's another one in the same song. The song, as I said, "Mere Rang Mein Ragne Wali." हाँ. Yeah, that's the Final song. countdown. वो It's तो the मैंने final भी सुना. countdown, हाँ, yeah, the final final countdown. countdown. Yeah. And there is a long list of it. There's a long list of There it. are n number of songs. अरे the very famous one that Pritam Buleya वाला. Oh yeah. That is Papa Roach's Papa. Last Resort. Last Resort. Anesthesia slash. There are so many. That riff is a very common riff. You know, I make them listen to this. Like, okay, then I do this. I to my students. I make them listen to Buleya. Like, you've heard Buleya? I said yes. Then I make them hear this one. I said just listen to this one. Okay. क्या बात कर रहे हो? Then I show them one thing. No, like they don't believe me. Okay. Now there's this movie. I know Shah Rukh Khan's movie. I don't remember which one. Pretty Woman. हाँ. Yeah, that's a song from 1965 actually. 1965. Yeah. That old. Elvis Presley. Yeah. Walking down the street, pretty woman. It goes like this. हाँ. It's a very, very old song. And you know, there are like, I don't know, I've come across many. Even some of, like, Pehli Nazar Mein is a copied song. And वो आतिफ असलम वाला पहली नजर. yes, it's a Korean song. अब इसके आगे मत जाओ प्लीज. मेरा चाइल्डहुड प्लीज. See, it's a global world now. सब एक दूसरे से इंस्पायर हो रहे हैं. Yeah, let's call it inspiration. Let's call it inspiration. मैं अब मेरे जैसे और लोग नहीं सह पाएंगे इस चीज को प्लीज. Okay, Yes, continue. Jokes But apart. anyways, you know, that's it's a long list, so I wouldn't continue here. तो अपना क्या podcast will have to put in like volume 1, volume 2 करना पड़ेगा. So I wouldn't- कोई नहीं. So I'm I up think- for it. No. But still, you know, what we'll do is, you know, this will go on. I'd rather, prefer that you go to the next question. Yeah, no. We'll cover up something else. The next question that I want to ask ki, as we were talking about rock and roll music and there is also many genres in it, sub-genres in it. So let's put some light into it कि कौन से genres आते हैं rock music के अंदर. See, it all started with blues. Blues. Blues is a very, very brilliant form of music. It is very Technical, very technical. very tacky. बहुत सारे लोग अभी भी मतलब स्ट्रगल करते हैं 10-20 साल प्ले करने के बाद भी ऐसा. It's so tacky. फिर Hey, I'm sorry, I'm going to interrupt this. Actually, you know, tacky is also a word resembling. Oh, it's so tacky. So is it techie or tacky? Tacky. TECH. Okay. It's very technical. Technical, हाँ, in short. Playing the instrument is very. It's very technical. difficult. और after that, rock, heavy metal evolved. Okay, heavy metal. Heavy metal and rock both evolved. साथ में साथ में. तो one of the founding members heavy metal के Black Sabbath करके एक बैंड है. Black? Black Sabbath. Sabbath. Ozzy Osbourne Okay. was the lead singer. He's the lead singer. He's Still alive. Still alive. So they started this in 1960s. So it is more than 60 years 60 years of of their rock career, and they were touring till last 3 to 4 years. Yes. He's not well, so he's not touring right now. But they've been playing the same music from last 50 years. I'll tell you this, like all the Marvel fans, is it Marvel? Iron Man is one. अरे AC/DC ना that No. Iron Man में No, yeah. AC/DC का गाना बजता है. No, that is not. It's not AC/DC. AC/DC was a totally different track going on there. That's Back in Black played in Spider-Man. Let me tell you this. You know, they have this da-na-na-na-na Iron Man theme, right? The Iron Man theme, yeah. हाँ. So that is actually a song. What's the name of the song? Iron Man. Iron Man is the name of the song actually. Sorry. Iron Man. Okay, मतलब Iron Man song पहले से exist कर रहा था before the character. And see, I'll tell you, what happens is here. Before the character, the song existed with the name Iron Came, I Man. guess, Yeah. after 40 years. Yes. What the? It says like, has he lost its mind? Can he see or is he blind? It goes like this. Now the funny thing is, I've seen like these guys who watch Netflix today mostly. You've seen this like I don't really watch series, but I've heard of Stranger Things and Thor, Thor: Love and Thunder. Thor: Love and Thunder has a theme song that is "Sweet Child O' Mine" by Guns N' Roses. Okay. And this particular She had a smile. That it seems to me. I think we'll have another show for that. So this particular series called Stranger Things, that is the song. I don't know the characters in that, but there's kind of a sword or something like that. So Master of Puppets by Metallica. A very, very technical song. If you go to play without a warm up,
your wrists will trouble you. It's that technical. Even I don't play that. I don't dare to play that. मतलब वो ट्रैक इतना कॉम्प्लिकेटेड है It's a rapid. सी व्हाट हैपेंड ना, उसके बाद फिर इवोल्यूशन होते गया, हेवी मेटल में भी स्प्लिट्स आए, फिर रॉक एंड रोल इवॉल्व, फिर तभी बैंड्स आए, बहुत सारे अच्छे अच्छे बैंड जैसे जॉन बॉन जोवी. बहुत ज्यादा फेमस. You must have heard this on the reels. It's my life. It's actually a very good song. After their career about they started in 75. 75. तो 20 साल के 25 साल के बाद आया ये गाना. Exactly. So Bon Jovi, Bryan Adams, Bryan Adams is Summer of 69, one of the legendary songs there. very very crowd catching. Yeah. और Yes. उसके बाद तो बहुत सारे बैंड्स आए जैसे स्कॉर्पियन से डीप पर्पल. तो अगर इफ यू वांट टू ब्रांच इट आउट कि कौन से जॉनर्स आते हैं, तो सबसे पहले मतलब नॉट स्टार्टेड विद, मतलब स्टार्टेड विद ब्लूज, बट अब भी कौन से जॉनर्स एग्जिस्ट करते हैं रॉक म्यूजिक में? सारे ही करते हैं, जैसे कि साइकेडेलिक रॉक है, साइकेडेलिक, हाँ, साई रॉक, इंडस्ट्रियल मेटल है. इंडस्ट्रियल, व्हाट इज इंडस्ट्रियल मेटल? इट्स सो हैवी और मतलब या प्रॉपर रेंज ऐसा, मेटल से भी हैवी, प्रॉपर Yeah. मेटल से भी हैवी. It's basically meant for people who are very different. बैंड लाइक रैमस्टीन. Have you heard about Rammstein? No. You got to see them live. You know, they take fireworks from like the pyro works like to the stage and back. Yeah. They play with fire on stage. They kind have of thing. a very powerful stage presence and very powerful music. I highly recommend renting up a big PA system like a DJ or something and then playing the song as a sound check. Yeah. If you don't understand the language but you'll understand the music, you know, it's so heavy. It's a bit scary, you know. Like, I don't know, Trevor Noah has done accents. I know this stand-up comedian. You know, the Russians, even when Russian, they speak, when they speak, no, even they're that speaking some wonderful thing, you'll feel like threatened, you know. yeah. So, no, Russian bands also like that. They're really good, but So you know, वो रशियन बैंड है, yeah. the one you are talking about. I don't know if it's a Russian band or a German band, I guess. Okay, so sorry, Blues, rock, The one who introduced me to Rammstein was Russian. okay, metal, then Industrial. in the 90s, progressive metal, alternative metal, alternative rock, फिर new metal हुआ, new metal, Rap rock. rap rock, हाँ, the Linkin Linkin Park Park वाला, and all हाँ, that came. rap rock, Limp Bizkit. psychedelic rock, psychedelic rock, they were Pink Floyd were pioneers. Pink Floyd, हाँ. They were pioneers. फिर उन्होंने उनका भी 50-60 साल हो गया. फिर थोड़ा बीटल्स भी उसमें घुसे थे ना मेरे ख्याल से. They were very kept on different. changing. They were very different. Beatles, Eagles, very different. No? So majorly क्लासिक रॉक की कैटेगरी में डालेंगे हम two लोग. countries led this music rock and roll evolution. One was Britain, one was USA. USA. So major of the bands in the world are from USA and from UK. Okay. So the gothic metal, हाँ, goth metal, death metal, वो क्या है? proper metal stuff was started from UK, England. Okay. And what we call the heavy metal. Heavy metal started in America. Okay. So heavy metal, goth metal, death metal, ये तीनों अलग-अलग है. हाँ. Metal has a lot of hair metal. subcategories. See, there are n number of artists and n number of songs. हाँ, okay. Metal has a sub branch of almost 200. 200. Yeah. सही में? Yeah. It is like that. See, some are playing so fast, some are playing hyper slow, some are so dommy. It's a total different. तो सबके लिए अलग-अलग It's कैटेगरीज not है. about your vocals, okay? When it comes to rock and metal, it's not about, you know, the agenda is not कि भाई तुम्हारा गले के तार कितने खुले और कितने सुरीले हो. It's never about that. It's about how heavy the music can be and your lyrics. How do you express the lyrics, okay? So that is what happens. This is what I'm facing here, like, you know, especially in Silvassa. I shouldn't say this, but you know, the crowd is supportive here, but very few are, you know, into it. See, you'll have to preach, na? You don't know. Yeah. Okay, there are crowd over here. Yeah. But they don't know. You have. Like for example, मेरा रॉक का सबसे पहला इंट्रोडक्शन वाज यू ओनली. आपने बोला था कि ये सुन. Then I got to know कि we used to have very creative sessions in lockdown time. 2020 we used to sit down at James' studio और इनके गुरुकुल में 10-15 बच्चे रहते थे ग्राउंड People used to stay there. टेरेस पे. Terrace पे भी रहते थे. सही में? Yeah, there were so many people there. 10-15 बच्चे मतलब they were regular ऐसा. कोविड टाइम से कुछ था नहीं करने को. Proper lockdown. So my classes were open 24/7 basically. तो basically I used to get up in the morning. First thing है अगर नाश्ता वास्ता करके अपने स्टूडियो पे पहुंचो और पूरा दिन वहाँ पे निकालो. Okay. 7-8 बज जाए 9 बज जाए ना फिर उसके बाद छुप के घर पे आओ ऐसा. Yeah, and you know क्या होता था, everything was closed outside, no? So even my windows were closed, हम AC chill करके बैठ जाते थे 20-21 पे रख के.
एंड बाहर पता नहीं चलता था कि कब दिन है कब रात है. कितने बज गए समझ में नहीं और आता इतने था. सारे डॉक्यूमेंट्रीज और डिस्कशन जैसे होते हैं ना, हम लोग इतने, क्योंकि बच्चे भी बहुत काश पुराने हैं. काश काश तब हम पॉडकास्ट करते वो इस सेशन में. Oh yeah, that would have वो been तो like मैं बहुत- सीरीज करना पड़ता every उसका. day I used to come and I used to suggest a band. हाँ. और हम उसकी अरे पूरी चाट डालते. पूरी हिस्ट्री 2-3 Now, घंटे 4 घंटे. funny thing क्या होता है पता है इनके साथ में, like you know, if you suggest a band ना, अब होता है कि कभी कभी कोई आर्टिस्ट है ना, एक बैंड में था, वो एक बैंड से दूसरे बैंड में जाता है, ओके, इस बैंड का हिस्ट्री चालू है, उसकी वजह से दूसरा बैंड का भी हिस्ट्री चालू हो जाता है, Okay. एंड द डे गोज ऑन. ओके. वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट. उसके बाद ये हेवी मेटल में और रॉक में आयरन मेडन्स दे आर स्टिल परफॉर्मिंग. वो सॉरी टू कट आउट बट वो कौन सा बैंड था जिसका लीड सिंगर प्लेन उड़ा के लेके जाए? That is Iron Maiden. Iron Maiden ना? Yes, that is yes. Iron Maiden. The Insane. lead singer of the They are so band talented. flies a bloody Boeing 747. टूर कर रहा है वो. Well, like, guys, एक minute. Where's our destination? Okay, chalo, let me fly. Meanwhile, I'll take the mic and practice the vocal. He's like, सोचा ना कॉकपीट में बैठ के वो प्रैक्टिस कर रहा yeah, they do that, no? He flew up a plane for 17 hours and straight away he went for a concert. है. Insane. That insane. energy. That was the level of energy and that was the level of Insane. commitment. Yeah, the commitment is actually what gave him the energy. You know, there are so many bands. And speaking of planes, you know, actually, Shadique bhai told me about this. Randy Rhoads. The guitarist whose name is Randy Rhoads, he used to play for Black Sabbath, right? No. Oh, sorry. For Ozzy Osbourne. For Ozzy Osbourne, the particular, you know. Okay. Singer. Yeah. So Ozzy Osbourne, like you know, this happened in Hindi. I'll just tell this in Hindi. You know, we have this scene here कि गाड़ी तेरा भाई चलाएगा. So there was this plane and Randy Rhoads was a bit high, I guess. I don't know. He was tripping on something. Not a plane, a small Charter. Charter, plane, yeah. yeah. 8-seater. 8-seater. So now what happened is, actually he only used me the word like गाड़ी तेरा भाई चलाएगा. So and you know sometimes when you know the guy is drunk or something, he's not. तो ले तू जाके आ, मैं बाद में आता हूँ. So thankfully Ozzy Osbourne said, I'm gonna go home. I'm tired or something, whatever. And Randy Rhoads said, okay, I'm gonna take the plane. He took the plane and he crashed in somebody's mansion. I'm so sorry, like I shouldn't be laughing at this. The world lost But he a very good guitarist. Oh man, he died. Yeah, He died, on yeah. spot, Oh yeah. man. But luckily Ozzy Osbourne is But still he didn't alive. knew to flew a plane. Yes. He didn't knew to flew a plane. You don't fly a plane if you don't know it, dude. So he just took a round and it was all well till then. He took a second round and then he lost control and then it dipped into a house. Yeah. Insane. He killed himself. गाड़ी तेरा भाई चलाएगा उसकी जगह प्लेन तेरा भाई चलाएगा. ऐसे आर्टिस्ट भी है और इंसेन भी है. नहीं रॉक द वे आई हैव एनालाइज्ड छोटा कम तो कम. आई बिलोंग टू अ हिप हॉप बैकग्राउंड. Initially I was into rock because of James bhai, but later Come I back. switched into hip Come hop. back, I'll हाँ. give you back. Yeah, नहीं. I heard you during COVID times. Yeah. You सही में? आप आए थे स्टूडियो पे. अच्छा हाँ I've heard. You have met before. नहीं मिले वो that तो I know but मेरे को नहीं पता कि मैंने अपने ट्रैक I सुना heard है you कि नहीं. singing, yeah. हाँ. So the crazy amount of जो आर्टिस्ट है जो रॉक में बिलोंग करते हैं, आई एम वेरी मतलब ओपनली सेइंग दैट हिप हॉप में वैसा नहीं है. लोगों को ऐसा लगता है कि हिप हॉप म्यूजिक आर जितने भी आर्टिस्ट रहते हैं वो जैसे एक बंदा है ट्रेविस स्कॉट करके, ही डू सम इनसेन शिट इन हिज कॉन्सर्ट्स एंड ऑल. लेकिन जब आप रॉक म्यूजिक के कॉन्सर्ट के वीडियोस देखते हो, आप फुटेजेस देखते हो, तब आपको पता चलता है कि ब्रो दिस इज इनसेन. इट इज अगेन ना, ये म्यूजिक कंप्यूटर पे बना हुआ है पॉप म्यूजिक. Sorry. गिटार इज आल्सो प्लेड ऑन अ कंप्यूटर. नहीं इट्स ओके. इतना सच नहीं बोलना था. इतना सच नहीं बोलना. It's okay. Guitar On the behalf of hip hop community, I don't take any. I respect all form of music, but the energy. The 90s hip hop was good, you know. That was, even though that was See, produced on it was computers. an evolution of hip hop. Yeah, at 50 that Cent point of and time. all It was these something guys, new. no? Michael Jackson and all that stuff came, Madonna came and एक अलग ट्रेंड चालू हुआ था. बट उसके बाद फिर ठीक है, उनके भी अपने फैन फॉलोइंग है. Michael Jackson as a pop artist hired great guitarists like Orianthi. Slash himself was playing for Michael Jackson. Yeah. See, even When he today, moved to India. even today, if you see all these guys, like even in Bollywood now, the trend has started. The pop singers, like to be honest, I have been a background DJ once for Neha Kakkar when she came to Silvassa. She wasn't that famous that time, and I didn't have a smartphone, so I'm sorry, couldn't have an evidence. But you know what happens is they have to interact with the crowd, na? So they just put a playback. They sing along with the playback. कभी you know if कुछ छूट गया बीच में तो वो playback संभाल लेता है, कोई टेंशन नहीं है. The manager was like next to me, सब कान में सुनाई देता है, वो ये पीछे रहता. Yeah,
But you know, nowadays what they do is, you know, they take अलग like backup singers साथ में. अभी क्या करते हैं, लाइव शोज होते हैं ना, तो वो प्लेबैक पे नहीं करते मोस्टली, प्लेबैक के साथ में पूरा बैंड ले जाते हैं, एंड द बैंड इज Old कवरिंग. school type. Yeah, improvise करना हो तो कर लेते हैं. So now what happens is, you want to interact with, if you're tired now, let the drummer keep playing, let the guitarist keep playing. थोड़ा रुक जाते हैं, बात कर लेते हैं. We'll go to the crowd, make them let's touch the engage mic with and the crowd, guitar, and then go for it. So this has actually brought up a lot of musicians, and I tell these people, no, those who have been like playing for live gigs for the Bollywood artists also, when you see them playing, I tell my students, they see, ये जो पजार है ना, जितना technical ये लोग play कर रहे हैं, these are all actually those guys who have been listening to rock and metal a lot. See, it's very technical. The reason I love rock and metal is not because of being cool, not because, you know, it makes you feel, chalo, I'm superior. ऐसा, rock is not about wearing black, keeping long hairs and a beard. ऐसा नहीं है, ये मेरा अलग choice है. It's not about music, ठीक है? Black by default क्या शनि का प्रभाव ज़्यादा हो गया बोल के कलर आ गया अपने उसमें. So, if you mix all the colors, it's all black, ना? तो क्या होता है, वो depend करता है ना, that psychology में अपन घुसेंगे नहीं. So rock and roll, ना, this is a misconception actually. Most parents, there's a movie called School of Rock. Jack Black, the artist, you know. I see in that movie, there's a parent who's telling his child, no, you know, no more rock and roll, no, listen to classic music. Okay, so that's like, you know, Western classical is also a very good thing. It's a foundation where you get very technical. So you know, it's like. This guy goes to a school as a proxy substitute teacher, and he's like, have you heard Led Zeppelin, AC/DC, Motorhead? He's like, everybody's blank. Everybody's blank. They're looking at him. क्योंकि वो मोजार्ट सुन रहे हैं और ये सब. No, not even that. He's like, God, what do they teach in this place? He's going nuts over there, and he goes to his van. He gets all the drum and this. Okay, new session. I'm going to grade you on this, and he takes the students to a, like, you know, a proper rock, you know, Event. Yeah, and his parents were, the parents of the children were very furious. But then when they see their children performing, you know, that's the story, you know. And this guy who became a substitute teacher actually was kicked out of a band. Okay. And Jack Black is all in all an amazing artist. He's a very good singer. He can cover like any most of the vocalists. So, dear viewers here, on behalf of Vintage Vibes Music and everybody in the rock community, especially my friend Shadique Bhai and Siddharth and Christy behind the camera right there, I would like to tell you this. See, rock and roll music is not about any substances or, you know, abusing. It's not about bad habits. It's not that rock and roll music is bad. It is just how you express yourself. Okay, rock and roll music क्या होता है, पेन को डाइवर्ट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है. वो पेन क्रिएट नहीं करता है. जिनके लाइफ में परम सुख है ना, उनको वो बहुत लाइक नॉइजी लगता है. बट यू नो, इफ द नॉइज इनसाइड योर हेड इज वेरी हाई, then that heavy metal, you need a medium to because express that. to be honest, like, you know, I go to the gym. I've just started the gym recently, and I am able to lift weights and do the cardio intensively because I plug in to heavy metal. And yesterday itself, I showed my gym trainer, I gave him my earphones, and I said, इसको कान में लगा के देखो. You know, he could not take it for 10 seconds. He could not take it for 10 seconds. He gave it back. Well, I listened to Taylor Swift and all that. I said, okay, I'm so sorry. Taylor Swift is good. I used to listen to Taylor Swift. But she's the number one artist in America right now. Oh my God. That is how it is. Even she drew 1.5 million crowd Yeah. in a concert. That's really good. Pop music is also this brings me to Trinity Rock and Pop, which I'll cover later. Yeah, something. See, it's so very tough, this form of music. See, in earlier days, there used to be ballads. Rock ballads. Yes, rock ballads. They used to be for 12 minutes, 13 minutes. 10 वो minutes. क्या होता है? Can you explain? See, अभी typically एक song की कितने मिनट का सॉन्ग होता है आज के बॉलीवुड? 3 मिनट, 4 मिनट मैक्स है. तो ये लोग सॉन्ग क्रिएट करते थे 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट, 11 मिनट. November Rain by Guns N' Roses. Many of the songs by Just Guns the N' one Roses, that I Pink actually Floyd, know. Iron Maiden, many, Deep Purple, Led Zeppelin, many artists. Stairway to Heaven is. So they used to have these ballads for 10 minutes and they used to play live. Every ballad at Pink every Floyd. concert with every note. और उतना बड़ा सेट होता था, and they have to They by used to heart remember. everything. Yeah, they used to remember. People had the patience to listen to so it. well. They practiced so well. Okay, they used to remember. They used to, मतलब एक दो नोट्स आगे पीछे हो जाते हैं. वो तो obvious है. 10-15 मिनट के गाने होते हैं, 3 घंटे के शो होते हैं. बट देन टू ये रॉक बैलेड्स होते हैं, वो अभी रॉक बैलेड्स बनना बंद हो गए. क्यों? क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. इजी स्टफ आ गया है. इजी स्टफ हैज कम ना. 3 मिनट 4 मिनट के सॉन्ग बनाने हैं. आपने सुबह सोचा कि मेरे को आज शाम को एक सॉन्ग रिकॉर्ड करके निकालना है, रात तक रेडी. वैसा वहाँ पे नहीं था. वहाँ पे कल तक 150 व्यू आ भी जाने चाहिए. 3 महीने लगते थे. See, now these people,
they never cared about who's going to listen to our songs. They never cared about भाई कितना views आने वाला है. See, they were ahead. They had social media and all, but they didn't care about this. The only reason they did it is because they wanted to express themselves. It was not to impress anybody. Now this legendary British band Queen, okay, Queen, yeah, everybody knows that band. People may not know He's the an band. Indian. The lead singer is an Indian. Yes. Brought up here in India. Freddie Mercury. Farrukh Balsara was his actual real name. Farrukh Balsara. No, he changed his stage name officially to Freddie Mercury. And then that band consisted of a dentist and astrophysicist. See what happened, na? These guys, जिनको नहीं पता आपने गाना जरूर सुना होगा We Will Rock You. Yeah, many songs. I want to break free. Yes. Women Rhapsody. The thing is, people have heard only We Will Rock You. इसलिए बताना पड़ता. Yeah, so It was an anthem. Yeah, it was an anthem. It's still an anthem. A lot of people. If at all I get a show where there's a good crowd, I end up with that mostly. It feels good. So the thing is, there's this song called Bohemian Rhapsody. Yes. Which he wanted to publish, and it was like 6 minutes long. The song was 6 minutes long, and the I don't know, the chairman or I don't know who was that of EMI Records. He said no, people won't listen. Who's going to listen to all this? He said okay, fine. Then he had some good contacts. Freddie was an artist in that case also, very good in making relations. He published his song on the radio directly, 6 minutes long, and I went to a radio station and they published this song on the radio. And that it was song, an instant hit. Yes. Radio was something very मतलब आज के टाइम पे radio has the value of radio has just Degraded. the chart has just gone the graph has just gone down. Spotify again, abhi. See, I'm telling one of my very fond memory of a radio. हाँ sure. When I was in 8th standard, I had a friend, a neighbor. उसके घर पे एक बड़ा सा सोनी का प्लेयर हुआ करता था. हाँ, that The gramophone. boombox type. हाँ. बड़ा एकदम सोनी का. हाँ. और उसके अंदर AM और FM के चैनल्स आते थे. Okay. तो we used to wait till 12 in the midnight. रात को 12 बजे के बाद है ना उस पे चैनल V और MTV प्ले The good stuff starts playing there. स्टेशंस. हाँ. रॉक म्यूजिक रात को 12 बजे के बाद बात चालू था. ये सब सो जाए ना उसके बाद ये बजा हुआ है. हाँ. Majority of the people 1-2% ही ऐसा सुन रहे हैं. It was like the caste system, So we used to stay awake ऐसा. We used to stay awake और we used to listen to very this beautiful bands. तभी Metallica, Bon Jovi और हमको तभी टीवी पे MTV अच्छा हुआ करता था. हाँ. चैनल नहीं true very true. तभी Splitsville और रोडीज नहीं थे. नहीं true. नहीं the MTV is the proper reason. music. Yes, MTV is the reason why biggest possible bands came into existence. Otherwise, they would have never been. And they recognized. got a great audience. And I'm thankful to MTV, even in India, like Coke Studio. Coke Studio wouldn't have been powered so well without MTV. It is because of MTV that so many artists, so many people today, man. अभी trending song चल रहा है आदित्य गढ़वी का खलासी हाँ. गोतीलो people do that, right? गुजराती So, yeah, Gujarati folk. It's amazing. I listen to it. मजा आ रहा है मेरे को सुनने में. Why? Greatest percussion artists like Shivamani, legendary Shivamani, A.R. Rahman. These guys come in, they reinforce a team from different countries and they play good music. Yes. What I love about them is the clarity of music, and they don't just mess around with music. See, playing music and playing with music are two different things. Different things. आप music play करो, उसके साथ खिलवाड़ मत करो. खिलवाड़ मत करो. यहाँ बहुत खिलवाड़ होता है. 4 chord पे 50 गाने बजा लो. 1 chord 30 दिन में 100 गाने सीख लो. ये स्कीम बहुत है, but these are useless things. These are money making things. I never promoted my music for money. इसीलिए I'm not very well known. Okay, ठीक है, जो लोग जानते हैं, those who know me personally will know me. कि म्यूजिक करना है. There are some people saying अरे सर मेरे को नहीं आना है अभी. मतलब क्यों? Fees and all. I said don't worry यार, क्या टेंशन है, आ जाओ म्यूजिक प्ले करने का है, आ जाओ बिंदास, कोई टेंशन नहीं. आपके सामने श्योर वैसे ही हो जाएंगे. सर कितना टाइम लगेगा गिटार सीखने में? अरे I'll tell you ना. सर एक महीने में हो जाएगा ना सर? I asked them one thing, मेरे पास जो आता है उनको पहले मैं पूछता हूँ आपका एजेंडा क्या है, मोटिव क्या है, क्यों सीखना है, इम्प्रेस करना है? हाँ नहीं, बोले सर यूट्यूब में. बोले एक काम करो, मैं आपको लिंक्स भेजता हूँ, आप वो यूट्यूब वीडियोस को डायरेक्टली कॉपी करके सीख लो और उसी को आप रीमेक करके पब्लिश कर दो, आपका चैनल सुपर हिट हो जाएगा. मैं बोलता हूँ जिस 4 chord पे आपको 400 गाने मिल जाएंगे, आप प्ले करो, मैशअप वैशअप देखो अच्छे से, कोई टेंशन नहीं है. बट दैट्स नॉट द मोटिव मैन, दैट्स नॉट द मोटिव. ओके, म्यूजिक फॉर मी इट्स अबाउट एक्सप्रेसिंग. लाइक पीपल टेल मी, अभी मुझे लोग बोलते हैं कि गिव द पीपल व्हाट दे वांट. आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट. अब प्रॉब्लम क्या है, व्हेन आई स्टार्ट सिंगिंग हिंदी ना, तो मेरा एक्सेंट थोड़ा अमेरिकन है. दिस इज बिकॉज आई बीन लिसनिंग टू इंग्लिश म्यूजिक एवर सिंस आई वाज अ किड. फ्रॉम वेंगा बॉयज टू बैकस्ट्रीट बॉयज इन वन डायरेक्शन ना, ईगल्स, बीटल्स, बीजीज, एवरीथिंग. कलेक्शन भी वैसा है अपना. अभी भी सुनते हैं तो वही सब सुनते हैं जो सब लोग नहीं सुनते. इसलिए कोई मेरे दोस्त मेरी गाड़ी में बैठे हो ना, तो क्या होता है, उनको कभी स्पॉटिफाई उनकी तरफ से देता तो मैं म्यूजिक प्ले नहीं करूँ. ऐसा सीन होता है कि भाई तुमको ये जमेगा ही नहीं. हम लोग रहते तो हम बहुत कुछ अच्छा सुन लेते हैं. नहीं, क्या कर सकते हैं. सो व्हाट आई डू इज
जेम्स सर सीधा रैंटिंग चालू कर दिया. We can understand your pain. So I tell them कि अगर आपको म्यूजिक सीखना है ना, at least give yourself 1 year. नहीं, true. What people fail to understand. वो यार मतलब इज अ फ्रॉड. 1 year ही 3 साल 5 साल 7 साल ऐसा यू टेक टाइम. नहीं वही कि No, 1 so साल लो और exactly. समझो कि तुम हाँ. सीखना चाहते हो और या Exactly. नहीं. नहीं, मैं उनको क्या बोलता हूँ, देखो क्या होता है, से एक बंदा आता है मेरे पास में, ठीक है, एक 10th स्टैंडर्ड का बच्चा आता है जो बोर्ड एग्जाम खत्म हो गया, उसको बहुत अभी परम शांति है लाइफ में, 3 महीने का वेकेशन है, कुछ करने का नहीं है, कॉमर्स लेने का होगा. वो बंदा में ना एक स्टीरियोटाइप है, कॉमर्स वालों को टेंशन नहीं है, ऐसा बोलते ना, ऐसा नहीं है, बहुत स्ट्रेस होता है लाइफ में. ओके, सो द थिंग इज, जैसे दिल काम सर 3 महीना है, सिखा दो. 3 महीने में सर हो जाएगा क्या? मैं बोला देखो 3 महीने में कुछ तो होगा, लेकिन ये जो 3 महीना है ना, ये वो स्पोकन इंग्लिश के कोर्स की तरह है जो आपको बुक देगा और 3 महीने आप थोड़ा सीख लोगे, लेकिन आपको पूरा नहीं आएगा. मैं बोला देखो आप अभी मे बी यू आर 16 years old इफ यू आर इन क्लास 10, 14, 16 व्हाटएवर. तो ऐसे ये देखो, आप जब बचपन से इंग्लिश सीख रहे हो या साइंस या मैथ सीख रहे हो, तो आपका फाउंडेशन पिछले 10 साल का है या 12 साल का है, तब जाके आप वो सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट ग्रास्प कर रहे हो. True. एंड यू रीचिंग एट अ वेरी डिफरेंट लेवल जो एक फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा सॉल्व नहीं कर पाएगा. तो सेम इज विद म्यूजिक. आप 10th में आने के बाद म्यूजिक को पहली बार लाइफ में समझ रहे हो, इट इज अ थियरी, इट्स अ लैंग्वेज ना, इट्स अ कॉन्सेप्ट. तो आप यू आर यूजिंग, यू आर बिल्डिंग योर मसल मेमोरी, यू आर गिविंग लाइक योर टाइम टू प्रैक्टिस. आप बिल्डअप कर रहे हो स्टेप बाय, उसके एक्सरसाइजेस होते हैं, सीधा जाके कॉर्ड बजाओ, गाने करो, ऐसा नहीं होता है. Proper theory. So when you're even if you're 16 years old or you're bloody 60 years old, if you're starting music on day 1 na, that is your kindergarten, that is your nursery, sorry, not I even started kindergarten. at 41. Yes. तो आप वहां से सीखो, आप 41 के हो या 4.1 के हो, the point is जेम्स सर मिले नहीं ना पहले. मैं 20 में चालू कर सकता था. the point is जेम्स सर तभी बहुत छोटे होंगे कि पब्लिक ये बात समझो, आप जिस दिन शुरू करते हो ना, वो आपको नर्सरी है. म्यूजिक हलवा नहीं है, टाइम लगता है सीखने में. Yes, ठीक है, प्लीज this is something which I would like to preach, and thanks to KAVOD Media that this thing will be out to the people. See, some people will get enlightened, some people will get offended. It doesn't really matter. हम तो बोलेंगे because preaching is full rant mode. जे भाई एकदम full rant mode. सालो आज मैं इस पॉडकास्ट में जाके अपना दिली भड़ास निकालूंगा. तुम लोग रुको. यार कॉफी ज्यादा पी ले. नहीं लेकिन ट्रू, नहीं वेरी ट्रू. लेकिन ये जोक्स अपार्ट, द थिंग इज कि म्यूजिक इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी. You only said it is. Yes, we're going to play till the grave, no? Yes. I have actually told my family and so, and students को भी बोला है, मैं 1-2 खास बच्चे हैं मेरे, तुमको बोला था मैंने कि देखो ये वाला जो मेरा गिटार रखा है ना, if I die ना, ये वाला मेरे साथ में अंदर रख देना, बाकी तुम ले जाओ. हाँ, ये मेरे कॉफिन में चाहिए मेरे को. क्यों पता है क्या, एक रहता है ना, मैंने देखा है लोग जब मरते हैं ना, सो दे कीप देयर, जो भी उनको प्यारा स्टफ था ना बॉक्स में डाल देते, जो कि फायदा नहीं है, वर्ल्डली लाइफ तो छोड़ दिया है, बट म्यूजिक इज दैट डियर टू मी. मैं नहीं प्रोड्यूस करता म्यूजिक. लॉट ऑफ पीपल टेल मी सर आप इतना कुछ करता है, प्रोड्यूस भी करते हो? ऐसे नहीं, मैं नहीं करता. मैं अपने लिए प्ले करता हूँ, मैं स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूँ. हर बंदा जो म्यूजिशियन है वो सीधा इसमें नहीं घुसेगा कि प्रोडक्शन करना है, स्टेज पे जाना है. कुछ लोग है ना पीछे रह जाएंगे और बाकी लोग को आगे बढ़ाएंगे ना. तो आई मीन टू म्यूजिक एजुकेशन. अच्छे म्यूजिशियंस प्रोड्यूस करना इज माय गोल. नॉट एग्जैक्टली प्रोड्यूस करना, बट टू हेल्प पीपल टू रिलेट टू म्यूजिक. ओके, नाउ ही विल शेयर हिज एक्सपीरियंस एज टू हाउ म्यूजिक हैज हेल्प्ड हिम. Because when I started ना, मैं तो 20-25 साल से सुन रहा हूँ, बट रॉक भी सुन रहा हूँ. हाँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि स्टेज पे चढ़ जाओ और गिटार को घिसो दो, ऊपर नीचे करो तो साउंड निकलेगा ऐसा. yes. तो when I went to studio, मेरे पास 10-15 साल से गिटार है भी घर पे ऐसा. ओके, लेकिन वो सड़ रहा था. वो गिटार अभी मेरे पास पड़ा है, शो पीस. हाँ, वॉल पीस पड़ा है वो. तो मैं लेके गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसने गिटार उठा के साइड में रख दिया. ये झाड़ू मारने के काम आ सकता है. वो गिटार नहीं था बेसिकली. He's exaggerating for effect. very offended कि यार मेरे को तो बर्थडे पे गिफ्ट मिला था ऐसा, बट दिया था मेरी वाइफ ने, तो इट वाज स्पेशल टू मी. सो मैं मतलब अच्छे से रखा, मैंने बजाया नहीं कभी उसको, ऐसा मेरे को आता नहीं था. तो धीरे धीरे करके सब थियरी सिखाई. अब जैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज है, वैसे C++, जावा, वैसे म्यूजिक की भी थियरी. इंग्लिश जैसे लैंग्वेज है, गुजराती, हिंदी जैसे म्यूजिक की भी एक अपनी लैंग्वेज है. यस, ट्रू. उसमें इतनी डीप और वास्ट थियरीज है, तो उसको एक दिन में समझ ही नहीं पाया. जैसे वो आप वो टैटू कराते हो ना, पता है म्यूजिक का, म्यूजिक का टैटू करा, वो एक्चुअली एक वो नोट है, वो लैंग्वेज का लेटर है, वो म्यूजिक थियरी. उसमें से सब ब्रांचेस इतने हैं ना कि वो मेरे ख्याल से सर भी अभी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं. जो ये अभी बोल रहे हैं ना, उसके लिए एक लेमैन बोलते हैं ना, आम आदमी की भाषा में मैं आपको ये समझाता हूँ. ये पेरेंट्स लोग बोलते हैं ना, मेरा बच्चा मैथ्स में बहुत वीक है. Oh, I'll tell you something. I'm sorry to all the teachers here. मैं खुद एक टीचर हूँ. I know this thing. ये होता है. क्या होता है ना, जैसी मोस्टली अपने एजुकेशन सिस्टम में अनफॉर्चुनेटली ऐसा प्रॉब्लम है.
सिलेबस का लोड रहता है ना, सिलेबस कंप्लीट करना है, तो क्या होता है पता है, टीचर्स विल कम ऑन द बोर्ड. सी अगेन ना, मैथ्स टीचर्स, आई एम रियली सॉरी, ऐसा नहीं है, एवरी टीचर इज डिफरेंट, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं. आएंगे, कॉन्सेप्ट क्विकली बता देंगे, सीधा स्किप टू दी एक्सरसाइज, और बच्चे लोग को नहीं समझ में आवाज किया तो बोले एक काम करो, एक्सरसाइज तुम खुद करके आ जाओ, आई विल नॉट टीच यू. वो मस्त एक्सक्यूज. बट द इम्पोर्टेंट थिंग इसकी फाउंडेशन क्लियर करना. उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए तुमको इलस्ट्रेशंस चाहिए, और इलस्ट्रेशंस के पहले तुमको उसका थियरी मालूम होना चाहिए. दिस इज हाउ म्यूजिक वर्क्स, यू नो. देयर आर मेनी गिटारिस्ट, देयर आर सो कॉल्ड म्यूजिक एजुकेटर्स एवरीवेयर, जो देखो ये गाना सीख लो ना, सबसे क्या अपना पापा कहते हैं, फेमस सॉन्ग्स, दे आर गुड सॉन्ग्स, दे आर लेजेंडरी सॉन्ग्स. आई पर्सनली प्ले गुलाबी आंखें, पापा कहते हैं, वो मेरे दिल के चैन. रेट्रो लाइफ है, विंटेज वाइब्स क्यों है, क्योंकि आई लाइक ओल्ड थिंग्स, अच्छा लगता है. बट समझो बात को कि जो आर्टिस्ट आपको प्ले करते हुए स्टेज पे दिखते हैं ना, उनके पीछे इयर्स ऑफ स्ट्रगल है. जस्टिन बीबर का सबसे पहला सॉन्ग आया था ना, पीपल लाइक बेबी, यू नो, he was trolled because of his voice. अभी जस्टिन बीबर कितना बड़ा आदमी है भाई, कितना. अरे अभी भी ऑन इज दैट यूट्यूब वीडियो, उस पे लाइक से ज्यादा डिसलाइक्स है. हाँ, तो इट डजंट मैटर ना. बट द लेवल दैट उसने वो, he is a good singer I guess. Atif Aslam's songs were cancelled from a particular movie when some tussle was there between the two neighboring countries, you know. People still listen to him. There are very talented Pakistani artists. Yes. There's this strings. When I was There's this movie. Jal the band. हाँ, Jal the band. What is the name of the movie? जो उसमें strings का एक जिंदा हूँ, there's a song. नहीं. Shoot out. No. Zinda, I guess, was the movie. Yeah, so Sanjay Dutt's movie. Yeah, Sanjay Dutt's movie. So in that there was a song Zinda करके लिखा था उसमें. Zinda, who is the name of the song? Strings is a very good band from Coke Studio. There is a joke around Pakistan music. Only thing about Pakistan is high music quality, low life expectancy. Yeah. But the high music quality is very true. Yes. And if you listen, you know, there's a mountain range called the Karakoram range. Yes. There's a band called Karakoram. Okay. Amazing, extremely heavy. You love them. उनका vocal quality कैसा ना, they don't add. I've never seen these artists adding auto tune. I'm speaking exclusively for rock and metal. Sorry. I'm not talking about See, hip hop and rock. They are raw hip hop and pop and all that. Many of the artists, I don't know, जैसे लता मंगेशकर, Queen है, कुमार सानू हो गए, रफी दा हो गए, they are the legendaries, no? Yes. तो उनका क्या टोन सूदिंग है ऐसा, बट इनका जो टोन है ना सूदिंग नहीं है. सो दिस इज हाउ इट गोज. बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, फॉर एग्जांपल कर्ट कोबेन फ्रॉम निर्वाणा. इफ यू हियर हिम ना, तुमको ऐसा लगेगा कि ये क्या कर रहा है, मतलब क्यों गा रहा है ऐसा. नहीं गाओ मत ऐसा लगेगा ऐसा मत गाओ, पर मतलब उनका स्टाइल है वो. हाँ, उनका एक नया स्टाइल, उनका एक नया जॉनर हुआ, वो उन्होंने अच्छा डेवलप किया वो. तो ही वाज मास्टर इन वो जॉनर का. गॉट इट. चलो अभी थोड़ा पिवट करते हैं. Okay. पिवट इन द सेंस, क्योंकि बट मैं बोल रहा था कि राइट नाउ एक चीज़ मैं पहले मेंशन करूँगा, उसके बाद अपने वो टॉपिक पे जाएंगे. वी वर टॉकिंग अबाउट द ड्रमर्स एंड दे यूज्ड टू कैरी, मतलब नाउ पॉप सिंगर्स हैव स्टार्टेड कैरिंग अ प्रॉपर ड्रमर्स एंड गिटारिस्ट दे हायर. सेम अब भी नया ट्रेंड चला है. यू गाइज मस्ट, मतलब आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन अभी हिप हॉप म्यूजिक में भी ऐसा हो रहा है. हाँ. There are, for example, if you have heard about Divine, तो वो बीट तो चल रहा है पीछे, जो उनका पूरा ट्रैक तो चल रहा है, लेकिन दे कैरी अ स्पेशल ड्रमर, और उनके साथ वो प्रैक्टिस करता है. एंड दैट इज अ वेरी ऐसी चीज है जो मेरे को ऐसा अच्छा लगता है कि ब्रो, व्हेन यू रिलीज अ स्टूडियो एल्बम और स्पॉटिफाई पे सुनते हो तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है. एकदम ऐसा लगता है कि क्या मजा आ गया, यू कनेक्ट होल हार्टेडली. फिर वही आर्टिस्ट जब स्टेज पे आता है ना, तो फिर उसको टमाटर पड़ते हैं. ऐसा हुआ है कनाडा में बॉटल पड़ा है गुरु रंधावा को, बॉटल पड़ा है इसके लिए. तो बेसिकली क्यों होता है वो, क्योंकि स्टेज पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, ऑटो ट्यून हो जाता है, थोड़े बहुत फ्लॉज आगे पीछे हो जाते हैं, सुर आगे पीछे हो तो भी एडजस्ट हो जाता है. तो लाइव ऑडियंस के सामने ये सब स्कोप रहता है, नहीं होता है. तो ये इट्स गुड ना, इट्स गुड. एंड आई विल टेल यू वन थिंग ना, जैसे आप बोलते ना आपको फीफा देखना पसंद है ना, तो यू नो फुटबॉल देखने में बहुत मजा है, बहुत सुख है. लेकिन बड़ा स्क्रीन ले, सोफा लेके बैठो, पेप्सी और पॉपकॉर्न लेके बैठो, मजा है. बट फुटबॉल खेलने में जो मजा है 90 मिनट वो मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने गली गली में यहाँ पे लोग फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं. फुटबॉल इज लाइक यू नो द वर्ल्ड्स बिगेस्ट
स्पोर्ट अनऑफिशियल रिलीजन. हाँ यस स्पोर्ट तो बहुत छोटा वर्ड है इसके लिए. तो वैसे ही ना म्यूजिक सुनने में तो मजा है ही, म्यूजिक प्ले करने में उससे ज्यादा मजा है. ड्रम्स आई टेल यू, मेरा ड्रमर आता है ना तो आई टेल यू ना क्या होता है, वो बहुत नॉइजी है ड्रम्स. विशाल, शाउट आउट टू विशाल शाउट आउट टू विशाल भानुशाली, यू नो. very talented किसी दिन boy, आएगा वो very पॉडकास्ट के talented लिए, boy. बट वो पॉडकास्ट में बोलेगा नहीं, वो सिर्फ ड्रम बजाएगा. वो बोलता नहीं, कैसे प्ले करता है. Yes. तो यू नो द थिंग इज, ये जो फील है ना लाइव म्यूजिक का, दीज आर्टिस्ट हैव नाउ अंडरस्टूड कि देखो अगर हम सिर्फ एक प्लेयर लेके चले जाएंगे वहां पे, बटन दबा दिया, म्यूजिक प्ले हो गया, तो बहुत ज्यादा कुछ हो नहीं पाएगा. कितना कर लेंगे हम लोग प्रोग्राम. तो फिर तुम में और डीजे में क्या डिफरेंस है? हाँ एग्जैक्टली. तो उससे अच्छा डीजे हायर कर लो. उससे अच्छा व्हाट आई डू इज क्लबिंग करो, पार्टी करो, उसके लिए ठीक है. If I want to listen, easy to run वाला if I want to listen to Arijit and B-Prack and all these artists, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे को मस्त लाइव फील चाहिए ना, तो I'll go to a nice club, है ना, मैं 2 स्पीकर हायर कर लूंगा अच्छे से, एंड सराउंड साउंड के साथ में बैठ के I'll take my food and I'll sit there and I'll enjoy ना. तो मेरे को टिकट का पैसा क्या खर्चा करने का जरूरत है? मेरे को वाइब चाहिए, मैं ऑनलाइन देख लूंगा यूट्यूब वीडियोस, मैं बड़ा स्क्रीन डाल के यूट्यूब वीडियोस को हेडफोन डाल के देखूंगा, लाइट्स लगा लूंगा एम्बियंस के लिए. वो नहीं चाहिए अपने को. द थ्रिल ऑफ हैविंग लाइव म्यूजिक इज वेरी अमेजिंग. Those who play will agree with me. क्या बोलते हो? बात सही है ना? ट्रू. नहीं, सेम गोज लाइव म्यूजिक चाहे आप कोई भी जॉनर करो. मैं आई एम अ वेरी ग्रेट फैन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, हिंदुस्तानी क्लासिकल एंड कर्नाटिक म्यूजिक. मैं सुनता हूँ ना तो एक मतलब मैं सुनता हूँ तो मोस्टली या तो ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे सुनता हूँ या यूट्यूब पे वीडियो के साथ देखता हूँ. लेकिन आई ऑलवेज इमेजिन कि जब वो लाइव, वो जो जैसे सितार में वो रिफ कर रहे होंगे. You have heard about सितार मेटल? यस वो एक प्रोमिनेंट आर्टिस्ट है सितार. यस मैंने सुना है. Guns N' Roses के भी काफी गाने इस सितार पे उन्होंने प्ले किए. हाँ, वो उनका वो आर्टिस्ट का नाम नहीं पता. Guns N' Roses का इलेक्ट्रॉनिक, वो सितार को इलेक्ट्रोनाइज कर दिया. Slash has a sitar, no? Slash when he came to India, somebody gifted him a sitar. He said this in an interview. हाँ ग्रेट. बहुत ग्रेट साउंड करता है. यस, तो वही कि मैं हमेशा आई ऑलवेज इमेजिन कि ये ब्रो, ये क्लासिकल म्यूजिक जब वो सामने वो तबले का वो जो धा तिन तन तन वो जो जब वो नोट्स बजते होंगे, वो जब फॉर एग्जांपल कभी मेरे को चांस मिला तो आई लव टू हियर जाकिर हुसैन बजाते हुए वो जो साउंड निकालते हैं, वो क्या साउंड करता होगा. टू वॉच एन आर्टिस्ट लाइव He's amazing. इंडीड ट्रू. ट्रू. हम कितना भी यूट्यूब पे देखे, कितने भी कहीं पे भी सुन ले आप, जो रूबरू जो है वो अलग है. I highly appreciate and value Indian classical music, no? Like क्या होता है ना, when you listen to actual, no, जो real artist है ना, देखो क्लासिकल प्लेइंग परफॉर्मेंस आर्टिस्ट में डिफरेंस है. और ना आज की तारीख में बहुत सारे लोग हैं जो बस थोड़ा सा कोर्स कर लेते हैं, दे लाइक हम क्लासिकल 30 days हम क्लासिकल वाले हैं. नो, वो भी अच्छा गाते हैं, ऐसा नहीं है, बट क्लासिकल म्यूजिक इज वेरी क्रिएटिव एंड आई टेल यू उसका थियरी बहुत तगड़ा है. इंडियन क्लासिकल एंड वेस्टर्न क्लासिकल. You talk about sa re ga ma pa da ni sa and do re mi fa sol la ti do. It's like different religions with different concept of gods and हाथ जोड़ रहे एक ही जगह पे, समझे कि नहीं? तो वैसा सीन है. Now classical, I just listen to very few songs though, and there's this band called Indian Ocean. नहीं, अरे you know the beauty of that song, he starts with a wonderful vocal, then he goes to थोड़ा nice electric guitar riff and solo kind of thing, and then comes to a nice classical part, you know, some tablas and all that, you know, and yeah, some alas. और वो वही वीडियो की बात कर रहा हूँ, वो ढाका वाला, उसमें I got amazed जब ड्रमर प्ले कर रहा है and he is singing that classical part. मैं बोला बाप रे कितना वो मतलब पूरा टैलेंट हाउस है. Another wonderful combination of Western music is Leslie Lewis from the Colonial Cousins and the legendary Hariharan. That the song is Krishna ni begane baru. That's a very wonderful song. And then he starts with the dark is coming round. By the way, they have visited Silvassa in a treat resort Silvassa, and I was working for a particular team that time, so we were there operating the system. So you had the opportunity to meet them? Yeah, I actually left a bit early. I saw them on stage, like hi hello hua tha, but then my team members, like the core team that I was working for, that they experience met would be great. Yeah, it's wonderful, you know, meeting artists is really good. And as a musician, sometimes you will get a chance to meet good artists, you know. Fans से ज़्यादा musicians का scope होता है. Great. So I was telling कि थोड़ा pivot करते हैं. तो pivot ये है कि अभी ट्रेंड चल रहा है, बट लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगा कि अभी ट्रेंड चल रहा है हिप हॉप म्यूजिक में, क्योंकि अभी डोमिनेट करता है हिप हॉप म्यूजिक ऑल ओवर वर्ल्ड. हिप हॉप म्यूजिक में ट्रेंड चलता है मॉशपिट का. ठीक है, मॉशपिट हो रहा है भाई, मॉशपिट मतलब इंडियन हिप हॉप में भाई मॉशपिट कर दिया, भाई क्या मॉशपिट कर दिया, मॉशपिट सीन था, ऐसे स्लैंग चलते हैं.
कि भाई कैसा शो होता है भाई, मॉशपिट, ऐसा स्लैंग्स चलते हैं. तो आई वांटेड टू मतलब मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि टेल मी अबाउट द मॉशपिट ऑफ रॉक म्यूजिक. कॉज मेरे को पता है कि वो बहुत, आपने मेरे को, जेम्स सर ने खास करके मेरे को वो कुछ मॉशपिट के वीडियोस बताए थे. वीडियोस बताया. Wall of Death. लैम्ब ऑफ गॉड वाज एन आर्टिस्ट. तो वो क्या होता है, वो सिनेरियो आप मेरे को वर्बली एक्सप्लेन करो. बेसिकली इट्स अ टग ऑफ वॉर विदाउट विदाउट अ रोप. without a rope. Okay, people are so high on music, they collide on each other. और वो it's a type of wrestling. यस It's यस a wrestling. वो बैंड करता ना, आधे इधर आधे आधे उधर, no holds barred. करके they create a rage and they collide. Modern kids को पता रहेगा DJ Snake. हाँ He does this wall of death. हाँ. 1, 2, 3, 4. Everybody collides like this. हाँ. क्या है ना, किसी का कमर टूट जाएगा, सर फूटेगा, वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. Risky है. इसलिए रॉक फैंस आर और अनदर हाँ, लेवल. which is why they call it wall of death. अभी कैसा है पता है क्या ना, अभी I'll tell you, मैंने मीम देखा है सिंगर्स का ना, लाइक किसी के सर पे कुछ गिर गया हो ना, ऐसा ब्लीड हो रहा हो, कोई बजा रहा है, फिंगर्स ब्लीड हो रही है, ऐसा गिटारिस्ट का बजा रहा है, लेकिन जैक वाइल्ड पर्टिकुलरली ना, उंगली से खून निकल रहा है, बजा रहा है, वो इतना सोलोइंग किया है. The show must go on. उधर लेकिन मीम आता है ना, वो एकदम एक एग्रेसिव डॉग बताया, एकदम छोटा सा पपी डॉग बताया, तो वैसे वो the show must go on ऐसा सीन है. पपी डॉग क्या बोलते हैं ना, I feel a tickling sensation in my throat, let's cancel the whole tour. तो ये, to be honest, this is the sad reality. कि see, these people, there were artists whose hairs were set on fire. James Hetfield from Metallica, when he was playing for this, I think it was in Canada, right? Montreal, Canada, you know. So what happened is, you know, pyrotechnics like fires निकलते हैं ना, तो क्या हुआ, एक pyrotechnic के ना, एक pyrotechnic क्या हुआ, malfunction हो गया. Yes, malfunction हो गया. जब उसको लाइट होना था तब नहीं हुआ, उसके थोड़ी देर बाद हुआ, तो वो वहाँ स्टेप कर दिया, उसका पूरा एक साइड जल गया. Oh, and still he was. he played. Yeah, then he was taken to hospital, and उसके बाद का दूसरा बैंड था, which is my favorite, Guns N' Roses. प्रॉब्लम कि उसका वोकलिस्ट थोड़ा सा नॉट सो डिसिप्लिन था, एक्सेल रोज. वो लेट आया, बजाया नहीं, पब्लिक गर्म हो गई, पूरा मॉन्ट्रियल का स्टेडियम तोड़ दिया, पूरा राइट्स हो गया, वैंडलाइज कर दिया. या एंडलेस कर रहे, मेरे ख्याल से वो तो बहुत ज्यादा हो गया, बबल वाला शो था. बहुत लोग, एक आध दो लोग मर भी गए थे शायद उसमें. ज्यादा लोग मरे थे. व्हाट इज दैट थियरी कि बहुत सारे ऐसे डेथ मेटल वाले वो लाइव ऐसा ब्लड कंज्यूम करते हैं, ऐसा इज इट ट्रू और नॉट? नहीं, वो सब गिमिक्स है, गिमिक्स. ओके. gimmicks है. वो बेसिकली क्या ना, मैं उसमें भी मेटल में डेथ मेटल वो सब जॉनर है, तो उनका म्यूजिक इतना ज्यादा बेसिकली बिब्लिकल है उनका. हाँ, वो मैं उस पे ही आने वाला था कि क्या बोलते हैं, सेटनिज्म बहुत चलता है रॉक म्यूजिक में. देयर इज बहुत सारी थियरीज है कॉन्स्पिरेसी. तो इज इट ट्रू और क्या सीन है? जस्ट शेड सम लाइट इनटू इट. व्हाट ही इज सेइंग, नो बिब्लिकल, आई एग्री विद हिम. होता क्या है एक्चुअली, नो, जैसे जस्ट फर्स्ट, सॉरी टू कट यू आउट, बट पहले बता दो कि बिब्लिकल इन द सेंस कैसे होता है ऐसा. सो द जो नया है रॉक म्यूजिक के लिए, उनके लिए आई एम पुटिंग माय पॉइंट ऑफ व्यू हियर, एंड आई एम श्योर ही विल हेल्प मी आउट विद दिस. कि यू नो, अभी होता है कि ना, इंसान जब कोई यू नो मंत्रस बोलता है, या नो कोई प्रेयर सॉन्ग बोलता है, या कोई पोम बोलता है, यू नो क्या होता है, he will not speak how he feel, he'll portray himself in that character. जैसे कोई एक विनाशक हो, एक डिस्ट्रॉयर हो, तो वो अपने आप को वो बोलेगा ना कि I'll destroy, I'll break you, I'll do this. या फिर कोई इंसान है जो अब्यूज फेस कर रहा है, तो वो क्या करेगा, he'll speak from the point of view the abuser, कि I'm going to do this to you. तो वो लोग क्या करते हैं, उनको बिब्लिकल चीजें पता है, but they see the dark side of the people also. कि लोग है ना, व्हाइट कॉलर लोग रहते हैं, वो व्हाइट कॉलर लोग है ना, बिहाइंड द सीन्स कभी कभी बहुत क्रूअल होते हैं, बहुत इवल होते हैं, corrupted, you know, evil. they try to project that point of view of some evil people outside there through their music. So they show the dark scenario. And to be honest, आप इन्हीं लोगों को जब बाहर मिलोगे ना, पहली बात इनको पहचानोगे नहीं, because their faces are like colored and all that, मास्क पहनते हैं and all that. So you meet them in the shopping mall, na? You'll They are probably people like you and me. Yeah, they'll probably Buying tomatoes in a mall. Yeah, cotton candy खा रहे होंगे, chocolates खा रहे होंगे, ऐसे लोग होते हैं. बट ऑन द स्टेज वो एकदम मतलब कुछ ऐसे मैं They बैठ create के, an aura. yeah, They create an aura. and that is performance. वो तो आर्टिस्ट है, उनके जो व्यूअर्स है ना, स्पेक्टेटर्स, वो भी ऐसे ड्रेस अप करके जाते हैं. वो चाय से ज्यादा किटली गर्म होने वाला सीन है. चाय से ज्यादा किटली हाँ, आर्टिस्ट इतना, एक मीम है जेम्स हेटफील्ड का, वो ऐसा हाफ पैंट और टी शर्ट में घूम रहा है नॉर्मली मॉल में अपने बच्चे को लेके, लाइक द लीड वोकलिस्ट ऑफ मेटालिका, एकदम सिंपल, एंड द फैन ऑफ मेटालिका. क्रेजी. लेकिन डू सेटनिज्म एग्जिस्ट इन रॉक म्यूजिक? Not rock music. The heavy metal. Heavy metal music. A little, yes. सेटन देखो,
रॉ लैंग्वेज में द गुड एंड द बैड, The good and the bad. गुड yes. एंड द बैड. सिंपल इन अ सिंपल लैंग्वेज. Yin yang, you कोई know. रिलीजियस बाउंड्रीज में नहीं है वो, कोई जानवर में आदमी में नहीं है फर्क. गुड एंड बैड इज फॉर एवरीवन, एवरी लिविंग क्रिएचर ऑन दिस प्लैनेट. एंड आप लोगों को पता नहीं, लेकिन वो जो सेटनिज्म का वो सारी चीजें हैं, नाउ इट हैड ट्रैवल्ड टू पॉप एंड हिप हॉप. सी इट इज ऑलवेज हद पार. अब वो ज्यादा हो गया है. वही मैं बोल रहा हूँ, If you हद पार. see- if you Rock see music The में- Weeknd and Katy Perry and all this, ना क्या होता है ना, now they have this not a good thing. Okay. क्या होता है ना, what I do is I listen to a lot of songs. We all listen to a lot of songs. You know, हम लोग क्या कहते हैं ना, we listen to the music. We don't follow the lifestyle. अभी मेरे को अगर 50 Cent पसंद है ना, वो hip hop, डिफरेंस करना, yes. वो डिफरेंस तो करना बहुत इंपॉर्टेंट if है. I like an artist ना, तो मैं जाके वो आर्टिस्ट की तरह ड्रेसअप नहीं करूंगा. मैं वो उसका, मुझे आर्ट पसंद है, आर्टिस्ट पसंद होना पसंद हो, आर्ट पसंद होना चाहिए. पॉइंट ये ट्रू ट्रू. पॉइंट इज दैट ना कि ब्लैक सबथ वाज अ बैंड दैट वाज कंसीडर्ड टू बी Satanist. हाँ. बिकॉज ऑफ द नेम इटसेल्फ. क्या नाम है? Sabbath is basically a very holy day, the last day of the week. संडे Sunday. सैटरडे Actually Saturday होता है, but अभी Sunday due to some जो भी. तो ब्लैक सैबथ. रेस्टिंग डे. हाँ, yeah. तो ब्लैक सैबथ. सबथ इज अ रेस्टिंग डे. You don't work on that day, you just pray and all that. So they were considered, बहुत सारे लोग बच्चे लोग को मतलब नहीं दिखाने का ऐसा, ये इज नॉट अ गुड म्यूजिक. ओके. दे क्रिएटेड सम वेरी गुड मास्टरपीसेस 50 साल पहले. 50 साल कल पहले. रात को ही मैंने एक शेयर किया था, वॉरपिक्स. War pigs. वॉरपिक्स दे क्रिएटेड सॉरी क्या क्या? War pigs. वॉर पिग्स. पिग्स या वॉरपिक्स. सो 50 साल पहले उन्होंने एक, इट इज अ वॉर सॉन्ग. जो वॉर क्रिमिनल्स हैं, जो वॉर कराते हैं, जो कंट्रीज एक दूसरे पे वॉर कर रहे हैं आज के डेट में, फॉर व्हाट्स आर योर रीजंस. इसने मुझे मार दिया पहले, मैंने बाद में मारा, या हम दोनों की आइडियोलॉजी मीट नहीं हो रही है, गवर्नमेंट्स के कॉन्फ्लिक्ट्स है, बॉर्डर के कॉन्फ्लिक्ट्स है, व्हाटएवर बी द रीजंस, पॉलिटिकल हो गए, रीजनल हो गए, रिलीजियस हो गए, जो भी रीजंस हो गए, ये जो वॉर हो रहा है अल्टीमेटली इसमें जो ये क्राइम है, ये क्राइम में सफर कौन करता है? सिविलियंस. ट्रू. बच्चे, वही ट्रू. सिविलियंस, दे सफर द मोस्ट. और कौन गेन करता है वो आज तक पता ही नहीं चला वॉर में. फिर भी वॉर, Politicians. 50 इयर्स पहले इन्होंने जो वॉर सॉन्ग लिखा था, वॉर पिग्स, वो आज भी इतना प्रेवलेंट है और इतना हैवी है आज भी. मेरे ख्याल से आज की डेट में भी ऐसा कोई आर्टिस्ट ये सॉन्ग पर्टिकुलरली इनके जैसा क्रिएट नहीं कर सकता. इतना पहले होता है ना, इतना इंटरेस्ट नहीं लोगों को. मैंने सुना नहीं है, मैं सुनूंगा जरूर. You listen to the song. Yeah, you know, you need to actually be enlightened a lot by history. So he was बहुत पढ़ना पड़ता है. आई एम अ हिस्ट्री नर्ड, तो मैं मेरे लिए तो he was preaching something that was so prevalent 50 years back. Yeah. You know, That is there's still prevalent today also. there's this and band- right now we all know what is going on in the world. There's this जो गलत band. हो रहा है वो उसने 50 साल पहले, he being an artist, he vented out his emotion through his lyrics or music. Yes, that's true. But he didn't judge anything. उसको जो लगा उसने उसने बोला. जो फील किया उसने उसको फर्क वो नहीं पड़ा, उसको फर्क नहीं अब पड़ा. किसी ने लिखा जो- होगा, हाँ. पर जो भी बोला गया था वो 50 साल के बाद भी इतना सही बैठ रहा है. क्यों पता है? आप जो चीज़ें यूएसए यूके बहुत बड़ी बड़ी जगह पे हो चुकी है ना, वो आप थोड़ा देखो ना, कहीं कहीं वो चीज़ें अभी तो यहाँ पे से स्टार्ट हुई है. है ना, जैसे ना मैसेकर्स होता है ना, there's this band called System of a Down. System of a Down, yes, yes. Genocide देखा है वो लोग ने. Armenian people, but they've been like brought up. वो inside in कहाँ US. से वो अर्मेनियन बैंड? Armenian band है, but they are actually all settled in the US and ये all. जो पर्टिकुलरली मॉन्स्टर्स ऑफ रॉक फेस्ट था ना, ये फेस्टिवल के बाद है ना, तभी रशिया नहीं था, यूएसएसआर. यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन ये बैंड ने परफॉर्म किया ना, उसके बाद वहाँ पे सिविल वॉर चालू हुआ वो कंट्री में और डिसइंटीग्रेट हुआ. मतलब अब बिकॉज They ऑफ अ बैंड अ started सिविल a वॉर rebellion. They occurred. started Because a of the rebellion. ideology of the band, the people over there were so suppressed. They weren't allowed to listen to music. अभी आज की डेट में इंडिया में अगर हमको कोई बोल दे कि तो आपको म्यूजिक नहीं सुनना है पब्लिकली, तो ये एक जात का वही ऑपरेशन नहीं है, सप्रेशन. yes. तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो उन पे एकदम दबा के लाउड स्पीकर्स अलाउ नहीं करना है. वो इतने ये नहीं करना है, वो इतने नहीं ज्यादा ये करना है. बैंड आया, उसके Operation बाद ही है. पीपल गॉट सो एग्रेसिव और उन्होंने रशिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ उसके बाद ही. मिखाइल गोर्बाचोव मिखाइल, यस. ही स्टेप डाउन. ये मतलब ये बैंड इतना पावर रखते हैं वही वर्ल्ड फोरम पे. They can become presidents just like that. मैं एक दिन बैठ के डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा था. आई लव टू वॉच डॉक्यूमेंट्री. मैं सीरीज से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज देखना प्रेफर करता हूँ. तो मैं ऐसे ही कोई तो एक यूट्यूब पे ही था डॉक्यूमेंट्री, तो उससे मेरे को पता चला था कि रॉक म्यूजिक इज नॉट जस्ट अबाउट म्यूजिक, इट्स मोर पॉलिटिकल. Yes. बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल है. It's a voice basically, voice of the suppressed. अभी द ग्रेट वॉल ऑफ बर्लिन, बर्लिन का वॉल जब गिरा था, स्कॉर्पियंस, पिंक फ्लॉयड, ये सब बहुत सारे बड़े बैंड थे, उन्होंने वहाँ पे जाके परफॉर्म किया. और ऐसा था कि मतलब खून खराबा हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ हुआ नहीं.
पीसफुली पीसफुली विद द हेल्प ऑफ म्यूजिक पीसफुली ये वॉल खत्म हुई बीच में से और बोथ कंट्रीज यूनाइटेड. यस So music has been a very powerful weapon. True. Education and music जब combine होता है ना, तो फटे see, people who कॉम्बिनेशन are पहली बात तो मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, उसके ऊपर म्यूजिक मैं रॉक और मेटल ही सुनता हूँ. समझ रहे हो ना? गेटिंग माय पॉइंट ना? Yes, yes, I- वो deadly recently combo. chapter खत्म किया है, नार्सिसिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर. बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो. क्रेजी. तो वैसे ही चलो विल स्टार्ट विद के रॉक सीन्स इन इंडिया. व्हाट आर द रॉक सीन्स इन इंडिया? रॉक सीन्स इन इंडिया मतलब 90s 80s क्योंकि यू ऑल बीन फॉलोइंग. मुंबई में वी बिलोंग टू सिलवासा. अपने सबसे पास में मुंबई पड़ता है. हाँ. गुजरात में बट ऑब्वियसली रॉक का इतना कल्चर है ही नहीं है. नहीं अभी भी शायद नहीं. बराबर. हाँ. कम है. तो द बिगर सिटीज जो मेट्रोज है कलकत्ता, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली में भी नहीं. दिल्ली में नहीं. कलकत्ता और बैंगलोर मैंने सबसे ज्यादा कलकत्ता में सुना. आर्टिस्ट लोग जाते हैं पर कलकत्ता रॉक पे इंक्लाइंड है, मेटल पे कम है. पर बैंगलोर इज द ओनली सिटी इन इंडिया वहाँ पे इतने ज़्यादा रॉक आर्टिस्ट आए हैं बड़े वर्ल्ड से. और हर एक कॉलेज में एक रॉक बैंड है. एक रॉक बैंड. और इट्स अ सिटी ऑफ कॉलेजेस. बैंगलोर सिटी ऑफ गार्डन्स एज वेल एज सिटी ऑफ कॉलेजेस. मतलब एवरी एक दूसरी गली में आपको एक कॉलेज मिलेगा. वो पढ़ाई हो ना हो, रॉक म्यूजिक जरूर हो रहा शाम को है. जैम सेशन के लिए स्कूल कॉलेज के जैम रूम में पहुंचाने का होता है. पहुंच जाने का. तो बेसिकली वो कल्चर अभी जो है वो अलाइव है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है. नहीं मैं आई हैव ट्रैवल्ड टू नॉर्थ और ईस्टर्न वहाँ पे बहुत स्टेट्स. बड़े अभी भी कॉन्सर्ट्स होते हैं. अनफॉर्चुनेटली मैं कभी जा नहीं पाया वहाँ पे. नहीं मैं गया हूँ लेकिन मैंने अटेंड नहीं किया. लेकिन एज अ म्यूजिशियन आप देख सकते हो कि वहाँ पे कॉन्सर्ट वगैरह होते हैं ना, वो ओपन लैंड पे जैसे वुडस्टॉक में होते हैं, पहाड़ों पे पहाड़ों पे. plain lands हाँ. जैसे अपने महाबलेश्वर वगैरह या अपने जो भी district समझ है, गया उसके टेबल लैंड्स हैं वही. वैसे कॉन्सर्ट्स होते हैं वहाँ पे एंड ओपन एयर में. वो जो ऐसे ओपन एयर वाले कॉन्सर्ट्स हैं ना, मेरे ख्याल से वो रॉक म्यूजिक से ही इवॉल्व हुआ है जो अभी हो रहा है. फॉर एग्जांपल बहुत सारे बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, म्यूजिक फेस्टिवल्स, पब्लिक इतनी ज्यादा हो जाती है ना, मैंने तो देखा दे वर होगा. इंस्पायर्ड बाय अब दैट. ऑडिटोरियम्स वगैरह की कैपेसिटी है, इंडोर स्टेडियम्स की कैपेसिटी है. नहीं है. वेम्बली है फॉर एग्जांपल, लंदन में वेम्बली है. अभी वहाँ पे अभी जस्ट U2 ने परफॉर्म किया अमेरिका में. स्पीयर ऑफ कौन सा था वो? आई जस्ट सेंट यू द ऑडियो. I forgot the name, sorry. स्पीयर, लास वेगास में स्पीयर करके एक थिएटर है अभी, वहाँ पे U2 ने परफॉर्म किया है. इट्स आई गेस वर्ल्ड्स बिगेस्ट इंडोर थिएटर. तो ऐसी सब जगह है लेकिन बहुत कम जगह पे है. जैसे नमो स्टेडियम में समडे, नमो स्टेडियम में हम देख सकते We are hoping to see a rock band perform over there someday. नहीं जरूर क्यों नहीं. इट्स अ वेन्यू. Yes. It's a good venue. It's a good venue. You know, accommodation, everything is nice. तो बॉम्बे में नहीं है, कम है. लेकिन बॉम्बे में मुझे पता है कि पीपल लव रॉक. And Hard Rock I know Cafe. people. Hard Rock Cafe is exclusively For rock it fans. started that way. अभी पता नहीं क्या सीन चल रहा है, but ठीक है. अभी तो हिप हॉप शोज भी हो रहा है, पॉप शोज भी हो रहा है हार्ड रॉक में. मैं देखता हूँ, मैं फॉलो करता हूँ उनके इंस्टाग्राम चैनल को. इट इज प्रमोटिंग म्यूजिक बेसिकली, ऑल काइंड ऑफ म्यूजिक. चलो एक चीज को वापस हिट करते हैं बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड मजेदार कॉन्सेप्ट है. द क्रेजी स्टोरीज ऑफ बैंड, रॉक बैंड्स. आपको जितना भी पता हो कि क्या क्या वो लोग बात दी करते हैं एंड ऑल, क्या लाइक thousands and thousands of stories है. कुछ 1 and 2 stories will be. 150 एपिसोड बनाना पड़ेगा पता है. नहीं इसलिए मैं बोल रहा हूँ 1 and 2 stories, 1 या 2 काफी है. वन ऑफ द स्टोरीज तो ये एक बंदे ने प्लेन ड्राइव कर लिया था. प्लेन तेरा भाई चलाएगा. दूसरा जैसे अपन इज फ्लाइंग अ प्लेन. हाँ, बोइंग चला के वो कॉन्सर्ट आयरन मेडन. अब बाकी बैंड्स है ऐसा है जैसे गन्स एंड रोजेस है. स्लैश समटाइम्स इज सो ड्रंक ही कुडंट स्टैंड. मतलब वो लड़खड़ा था स्टेज पे. वो लेकिन नोट सही बजाता है. वो कॉन्सर्ट पूरा किया है उसने ऐसा. wasted. But we don't promote that. We don't promote that. Yes, it's true. क्या होस्ट में म्यूजिक ज्यादा अच्छा होता है, no doubt. True. But क्या होता है ना, he has also improved over the period of, if you see him now in ना, his younger days obviously. ये सारे बैंड इतने नोटोरियस थे, ये इतने हैवी थे, इनके कारनामे सारे. Guns N' Roses was known as one of the dangerous bands in the world. Dangerous in the sense? क्या होता है ना उनके लाइक उनका इवेंट पे ऑरा ही ऐसा बन जाता था ना, थोड़ा ना लड़ाई झगड़े हो जाते थे उनके फैंस मारकाट हो रहा है. टिकट नहीं मिलते तो बाहर Vandalize कर रहे हैं. These bands were not promoting these bands were not promoting this. पर उनके जो फैन हो फॉलोइंग जाता था वहाँ पे फैंस. दैट इज व्हाई ये म्यूजिक को थोड़ा नॉर्म हो रखा है कि भाई ये क्या है पता है? गड़बड़ है ऐसा. क्योंकि वो एक बार वहाँ पे घुसे तो फिर there is no comeback. I'll tell you. अभी जैसे क्या हो रहा है, मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ. इंसान को कॉफी पी के एनर्जी बहुत ज्यादा आती है. अब वो
भड़का हुआ रहता है तो कॉफी बदनाम हो जाता है. हाँ, प्रॉब्लम इंसान में है. Ozzy Osbourne during an interview, हाँ the lead singer of Black Sabbath, he just beat a bat. और oh my god, उसने he bite thought कर it's a rubber bat. किसी ने चमगादड़ उसको चमगादड़ लगा चमकादड़ उसने उसको ऐसा लगा रबर का प्रॉप है तो वैसे किसी ने टाइप फेंका ऐसा होएगा उसको, किसी ने है ना? फेंका उसके पास में उसने बैट. ऐसा मस्ती मस्ती में उसको बैट कर दिया कॉन्फ्रेंस, मतलब उसको लगा वो चल रहा रबर था का है. एक इंटरव्यू में. फैन किसी फैन ने फेंका, ओली है उसने चबा दिया उसको. बोला oh god that is real. Oh my god. क्रेजी. वैसे बहुत सारे कारनामे हैं इनके. बहुत और हैं, आफ्टर बीइंग इंसेन और ड्रंक कारनामों की लिस्ट खत्म नहीं लेकिन होती. आपके हिसाब से सबसे क्रेजीएस्ट ऐसा क्या स्टोरी हो सकता है Yet to जो आपको क्या yet to explore. But See, मुझे ऐसा लगता है ना कि क्या बोलते हैं, इंसेन कंडीशन में कोई टॉक्सिक कंडीशंस में वो ये चीज़ ग्लोरीफाई नहीं करनी चाहिए. It is नहीं, not good नहीं, for any we- music. मुझे ऐसा लगता है मोटिवेट करने वाली चीज़, डीप पर्पल एक बैंड है, हाँ उसका एक ड्रमर, उसका एक हाथ नहीं है, हाँ एक ही मतलब एक हाथ से play हाँ. करता है. सॉरी, yeah, इट्स नॉट डीप पर्पल. it's Hysteria में उसका? से इतने सारे बैंड सुनने के बाद ऐसे ही होता है यू गेट कंफ्यूज. Def Leppard. Def Def Leppard. Leppard. is the band. Def is the Leppard. Def Leppard, band. yeah. DEFM, huh? DEF. So he doesn't have one hand and he plays the You see drums the better drummer. than a two hand. He He is plays. amazing. सो ही प्लेज ओनली विद वन हैंड. Yes. With one hand and you can't even मतलब फील कि आपको He सुनने plays में like- आएगा. तो फिर वो टॉम्स कैसे बजाते हैं और अरे, क्रैश. उसके लिए एक वीडियो है, लिंक पोस्ट करेंगे आपको, आप क्लाइंट को पोस्ट कीजिए, उसका डेमो है, द शो ऑफ हैंड्स बोलते हैं ना, हाँ वो एक हाथ से इतना तगड़ा प्ले He lost करता one है. hand in accident ना. Crazy. Band ने उसको वो नहीं किया, छोड़ नहीं दिया उसको. हाँ वो होता है ना. बैंड ने उसको बोला कि Band you के play. कि नहीं भाई तू प्ले हाँ, कर. yes. और he played, अभी तक बजा रहा है. क्रेजीएस्ट With one क्रेजी. hand. You'll feel like he's having four hands. इतना तगड़ा प्ले करता है. I'm not Crazy. exaggerating. हाँ, हाँ, seriously ऐसा you है. just listen to आई the मस्ट video, चेक इट yeah. आउट आई मस्ट चेक इट आउट फॉर ऐसे श्योर. बहुत सारे हैं. बहुत है. और देखने जावे तो बैंड एक्सीडेंट्स, जैसे मेटालिका का बैंड टूर कर रहा था, तो दे वर सो हाई, तो बैंड मेंबर्स तो हाई रहते हैं, समझ में आता है. हाँ ड्राइवर भी ड्राइवर को हाई रहेगा तो नहीं समझ में आएगा. ड्राइवर को यू शुड बी सीन, ही इज ड्राइविंग द ट्रक. तो एक्सीडेंट हुआ ना, तो ऐसा एक एक्सीडेंट हुआ ना कि वो क्लिफ बटन करके उनका बेसिस था. you know the one who played in Moscow, हाँ. हाँ वो सीधा कांच तोड़ के बाहर. ग्लास तोड़ के बाहर गया और ही डाइड. ऐसा किसी मर को गया. पता भी नहीं था ऐसा एक्सीडेंट हो गया और हमारा एक आदमी मर गया ऐसा गिर के. उनको पता ही नहीं So चला. they were that irresponsible in their young days. हिप हॉप मैं वही तो बोल रहा हूँ. रॉक Some of them overdosed and killed themselves. Yeah. Literally, बहुत सारे लोग ऐसे थे. Amy Winehouse, she died of too much intoxication. See, we always tell you, no, कि crowd, I'll tell you, no, लोग होश में आ गए हैं. बात मानता हूँ कि you know सोशल मीडिया पे ना we spread awareness. हम लोग as an educator spread awareness कि let music be the ecstasy, you know, don't take anything else. यस ट्रू But ट्रू. no, क्या होता है पता है ना, You be high on music, हाँ, yeah. बी हाई ऑन म्यूजिक. वो सीन अलग है ना. वो सीन मतलब कहता है I don't get good sleep and all, no, but I'm peaceful when I listen to music. He showed me that एक दिन के ऑफिस में बैठ के I'm just playing guitar. James, right now see you're in the zone. This is what you know, this is what makes you feel good. तो वैसा ecstasy वाला सीन है. And these people who went off ना, who damaged their lives and all, वो कहीं ना कहीं ना we feel sorry for them कि you know they were good musicians, they were assets to the world of music, but they went off sadly at a very early age. We call them the 27 club. 27 club, yeah. On an Many- average many of 27. हाँ Yeah, there is a theory of 27 27 club. yes 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 I know Jimi I know. Hendrix, Kurt Cobain, Amy सब Winehouse, 27 Chris club के Cornell. members हैं. Chris Cornell, yes. Exclusive Many members. band members. They passed at तो very young age. too early, like अभी तो life शुरू हुआ था. I'm like I'm older than them right now when they died, है ना. तो but see Notorious incident जो आप बोल रहे हो ना, तो ये सारे ना सब intoxication वाले ही है. तो let's not होश में glorify किसी that, ने yeah. कभी And we by we never support any Yes, true. intoxication. Just a disclaimer what we कि- support is purely music. yes. If you want to get intoxicated, do it with music. That's all. It's a And if you're vibration. struggling किसी भी Yes. मेंटल चीजों के आप म्यूजिक सुनो ना, अगर आपके ना दिमाग में बहुत ज्यादा आवाज है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, सुन के देखो हेवी मेटल आपको शांत कर देगा. It will bring you down from depression. or else take a professional help. No doubt, that is true. We cannot match professional help. But see, music as a therapy, even psychiatrists, It heals. psychologists will It heals. will help you. heals. वहाँ पे भी Any musicians ही form of होते हैं. music. Any form of music. साइकाइट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट के पास है ना, जो लोग बैठते हैं ना, who give you music therapy ना, वो musicians ही है. musician. अभी you know अपने यहाँ डाउन में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ वीक सेलिब्रेट हुआ था. हाँ, yes, For yes. 2 different institutions, I would not name them. I am grateful to them that they called me. Music as a therapy, you know. I put up a small. Oh, great. So I enjoyed, yeah. It was nice. A day before great. yesterday, I guess. Yeah, it was on Saturday, I guess, and one was just a couple of days ago. About talking about healing as a music, there are workshops Yes. in South India and most part of India.
दे हैव सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट. yes, I've heard about that. Vibrations, frequencies के हिसाब से, yes. जिसको मेंटल डिस्टर्बेंस है, एंजाइटी है, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मेडिकल कंडीशन से नहीं ठीक हो रही है, मेडिसिन से ठीक नहीं हो रही है वो कंडीशन. तो ये म्यूजिक हील कर रहा है और इट इज प्रूवन. एंड ऑल्सो प्रेगनेंसी के टाइम पे भी सजेस्ट करते हैं कि लिसन टू सम क्लासिकल एंड सूदिंग म्यूजिक. सर मेरे को बोलते थे कि मतलब वही वाली कितने टाइम में सीख जाऊंगा. हाँ, तो टाइम का कोई वो इट इज एन इनफिनाइट. क्या कभी सीखने मतलब पूरा सर भी मरेंगे तब तक सीखते रहेंगे. सर का एक है वो गिटार इज what type of instrument? एक dialogue है about guitar is a defiant instrument, you know, it will never let you conquer itself completely. ऐसा है. अब कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ नया निकलेगा उसमें. इतना सीखना है तो the more you practice the more you are fluent. It's just कि जब लाइफ की जर्नी में उसको साथ में as a great companion. टाइम नहीं मिले. Taking a guitar is like getting married. टाइम एडजस्ट होना है तो I used to carry a small amp at my office. Okay. लंच ब्रेक होता था ना तो 1-2 घंटा में तभी nice ऑफिस में प्ले कर लेता था. और many of the people in office in Bangalore and in corporate they do small amp और they plug और उनको खुद ही सुने. ऐसा भी नहीं है कि बाजू वालों को न्यूसेंस हो रहा है because नहीं, ये बहुत अच्छा तरीका है. कुछ कॉर्पोरेट ऑफिसेज में ना ये लोग इंटरव्यू भी लेते हैं. आपके रिज्यूमे में ट्रिनिटी का सर्टिफिकेशन रहेगा ना तो दे विल मेक यू प्ले ना. उधर एक बंदा बैठा था, आपको एग्जाम लेगा, वो टेस्ट लेगा. हां क्या? यू हैव टू गो थ्रू गिटार टेस्ट आल्सो टू गेट अ जॉब दैट इज नॉट रिलेटेड टू म्यूजिक. आई वाज वेरी एस्टोनिश्ड. सर जो ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पे सिखाते हैं तो ट्रिनिटी स्कूल ऑफ लंदन के लिए परफॉर्मेंस के लिए छोटे छोटे बच्चे 8 years 7 years दे आर परफॉर्मिंग ऑन गिटार एंड पियानो. वो एग्जाम्स के लिए जैसे म्यूजिक को अपने कैसा ना बहुत लाइटली लेते हैं पर ये ग्रेड्स है ना. ऐसा नहीं है कि ग्रेड से बहुत अच्छा म्यूजिशियन बन जाएगा. ग्रेड इज टू टीच यू द टेक्निक्स. ये टेक्निक आपको आ रही है, ये you belong to this grade. तो वो सर उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. मतलब ऐसा खाली वो नहीं है टाइम पास के लिए आओ तो अपना बजाओ, गिटार बजाओ, सितार बजाओ और अपना आराम से मतलब चिल करके चले जाओ. ऐसा इफ यू वांट टू टेस्ट योर लिमिट्स, इफ यू वांट टू टेस्ट योरसेल्फ, वेयर डू यू स्टैंड इन म्यूजिक, गो फॉर द एग्जामिनेशन. हाँ, ये चैलेंज लो. ये चैलेंज. ग्रेट. सो तो इसी रिलेट के व्हाट वुड बी द एडवाइस फॉर एस्पायरिंग म्यूजिशियंस, स्पेशली रॉक म्यूजिशियंस और गिटारिस्ट या जो जॉनर से आप दोनों बिलोंग करते हो, कि कुछ ऐसी एडवाइजेस की जो एकदम यंग है, जो रिसेंटली जिनको इंट्रोडक्शन मिला है इसके साथ और दे आर विलिंग कि ब्रो इसमें कुछ अच्छा करना है, लाइक ये सीखना है, मेरे को इसमें इंटरेस्ट है, कुछ करे या ना करे लेकिन ये सीखना है. तो व्हाट वुड बी द एडवाइस? एवरीबॉडी प्रीचेस समथिंग ना. तो मुझे क्या है ना, आई प्रीच थोड़ा सा रॉक म्यूजिक कि भाई नो, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि फॉर द एस्पायरिंग आर्टिस्ट, अगर आपने लाइफ में कोई गिटार पकड़ा है, स्टार्ट विद अकॉस्टिक्स, प्ले कभी कभी कूलिंग कामिंग म्यूजिक भी मूड पे डिपेंड करता है, बहुत जरूरी है. बट इफ यू आर लिसनिंग टू रॉक म्यूजिक, डू इट राइट. रीड अ लॉट ऑफ लिटरेचर, नो विच आर्टिस्ट वाज व्हाट. सी आई टेल यू व्हाट, एक ये चीज़ है कि इफ यू लर्निंग टू प्ले सॉन्ग्स ना, तो सपोज आई एम फॉलोइंग अ पर्टिकुलर गिटारिस्ट, मैं उसका स्टाइल प्ले करता हूँ ना. इफ आई वांट टू लाइक होता क्या है, आई एम नॉट जस्ट प्लेइंग दैट गिटारिस्ट, आई एम एक्चुअली डूइंग एग्जैक्टली व्हाट ही हैज फॉलोड फ्रॉम ऑल हिज गुरुज ना. क्या होता है, वो एक जनरेशन पास ऑन होता है. यस. सो पहली बात तो ट्राई करके देखो ना, डोंट जज, ट्राई, पिक अप द गिटार. आना है, ऑनलाइन हेल्प चाहिए, करो ट्राई एक बार, लिसन टू हाउ इट साउंड्स, टेक अ ट्रायल ऑफ अ मंथ और समथिंग, करके तो देखो, तब मालूम पड़ेगा. है ना. मूवीज देखने चले जाते हैं हम लोग सीधा, फिर पता चलता है 400-800 रुपये वेस्ट हो गया. चलो कोई नहीं, मूवी तो था. देन विल सिट एंड गिव अ 3 hour क्रिटिकल रिव्यू ऑन द मूवी जो नॉन सर्टिफाइड होता है. एंड व्हाट कैन आई से, बट वहाँ पैसा ज़्यादा ही चलता है. क्या होता है ना, एक बड़ा सीन है, एक शादी होती है ना, क्या होता है म्यूजिक को है ना, लोग हाउ पीपल ट्रीट म्यूजिक ना, बहुत ऐसे कम इवेंट्स होते हैं जहाँ म्यूजिक इज एक्चुअली द मेन एजेंडा, कि म्यूजिक के लिए लोग गैदर हुए. क्या होता है ना, शादी चल रही, थोड़ा म्यूजिक कर लो, प्रोग्राम चल रहा है, उधर कोई अंकल ऐसा वो मीठा पान बना के खा रहा होगा, कोई आंटी पानी पूरी खा रहा है, म्यूजिक मतलब चलना चाहिए. एंड लाइक वो क्या होता है कि आप म्यूजिक इज नॉट द मेन फूड. जैसे सीजर सैलड होता है, इधर ककड़ी वाला साइड में सैलड होता है ना, कि चलो लिया तो है, खाएंगे नहीं, एक आध दो चटनी. स्टॉप ट्रीटिंग म्यूजिक लाइक अ साइड सैलड. इट इज इम्पोर्टेंट. आपको नहीं समझ में आएगा शायद इसका इंपॉर्टेंस अभी, बट आप बोल रहा हो तो समझोगे. मूवीज में या सीरियल्स में बैकग्राउंड म्यूजिक हटा के देख लो कैसा लगता है. वो सोललेस हो जाता है. और फनी चीज, हमारे यहाँ की मूवीज में है ना, हर मूवी के लिए 10-12 सॉन्ग्स प्रोड्यूस हो जाते हैं.
होता क्या है उसकी वजह से लिटरेचर इतना बढ़ गया है, म्यूजिक का लाइब्रेरी इतना खतरनाक हो गया है कि क्या सुने और क्या नहीं सुने, फिर उसका रीमेक है ना बहुत. Every next day a new song is composed. And what they do, mostly Americans and Britishers, सीरीज हो या कुछ भी, दे बाय सॉन्ग्स फ्रॉम दीज आर्टिस्ट जिनको रॉयल्टी मिलते रहता है, तो आर्टिस्ट को भी सपोर्ट मिलता है और उनका सॉन्ग का जो लेजेंडरी ये है ना, इट लिंक्स एवरीथिंग ना. अभी आप एल्गोरिथम से ढूंढते हो, हैशटैग से ढूंढते हो, सब आपको मिल जाता है. तो वो ऐसे मिलेगा ना, नया नया सॉन्ग कितना ही ऐड करोगे. एक से आप म्यूजिक एज ए कैरियर बात करते हो तो एक इट इज अ डिफरेंट बहुत रिस्की करियर है, बट इट मजेदार भी होता है. ब्यूटीफुल. if you make it to the top. And you know, in the words of AC/DC, you know, I'll just sing it out for you. It's a long way to the top if you want to rock and roll. It goes like this. True. it's a long journey. Great. चलो, ending with last question to you both. Top 3 rock bands, metal bands, everything combined. आपके top 3 and सादिक भाई आपके top 3. I'll let him start first. I'll start with Black Sabbath. Black Sabbath. Number 1. I knew it. और number 3. नहीं रैंक करना है. 3 या 1. You can shuffle It matters. Number 3 I'll go for Guns N' Roses. Guns N' Roses. Okay. Number 2 I'll go for Nirvana Nirvana. because I like personally. वो आपका वैसा vibe है. I like the vibe. See, they were a disturbed band, but their music was Great. very good. But it was Actually. very good to listen on ears for a rock artist. And the first one goes is Black Sabbath. Led Zeppelin. Metallica भी है, but अभी वो अलग genre. नहीं वो पर्सनल चॉइस है आपका. वही वो आपसे कोई छीन नहीं सकता कि आपके टॉप 3 आपसे कोई नहीं छीन सकता. टॉप 3 नहीं, टॉप 30 पूछना चाहिए. लिस्ट बहुत लंबा आया था, ये सिर्फ को टॉप आया था. नहीं लेकिन मजा टॉप 3 में ही है क्योंकि इट मेक्स यू थिंक कि भाई किसको मैं रखो. वो ऐसा पानी पूरी की तरह हो गया ना, तीखा, मीडियम और मीठा है वैसा. So, चलो आपके टॉप 3. अभी ना क्या है, बहुत लंबा सीन है, बट लेट मी सी. इन्होंने गन्स एंड रोजेस बोल दिया है, बट क्या है ना, आई विल टेक गन्स एंड रोजेस फॉर मी ऑन लाइक नंबर 1 बिकॉज़ आई विल टेल यू व्हाई. स्टार्ट विद द 3. ओके, 3 वाला ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. नहीं मजा उसी में है. बहुत सारे बैंड्स हैं, बट इफ आई गिवन अ चॉइस, इफ आई हैव टू लिसन ना, जो आजकल मैं कुछ टाइम जब से जिम जॉइन किया तब से सुन रहा हूँ एक्चुअली, प्रॉफिट्स ऑफ रेज. प्रॉफिट्स ऑफ रेज. या प्रॉफिट्स ऑफ रेज. ओके, कहाँ के बैंड है ये? अभी they are all Americans, right? Yeah, American. Yeah, but क्या ना, America is a country of mixed races. कौन कहाँ से कुछ नहीं बोल सकते, but officially American citizens. प्रॉफिट्स ऑफ रेज नंबर 3. नंबर 2. नंबर 2 में एक्चुअली बहुत सारे बैंड्स हैं, तुम मेरे को 30 ऑप्शन दो, मैं अभी फटाफट नेम करता हूँ तुमको. इसलिए तो टॉप 3 है ना, मजा उसी में है. So another band now which speaks about, like, इसका लाइन है, watch your tongue or have it cut from your head. Save your life by keeping whispers unsaid. This is against dictatorship. Okay. Children roam the streets now, orphans of war. Bodies hanging in the streets to adore. This is a band called Avenged Sevenfold. Hail to the king. Okay, kneel to the crown. Avenged Sevenfold is a very good band. I take it on number 2. Okay, number 2. And And number 1. Guns N' Roses has inspired me. So that's why number 1. So I'm keeping it number 1, but then school नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, personal choice है. The first position is shared by 2 वाला सीन होता है ना, स्कूल में होता है ना, किसी बच्चे को बुरा ना लगे. कि तो I'll share the first position with Guns N' Roses and out of all the bands I would like to. So it's called a generation gap. Yeah. जिनका फर्स्ट नाम वही आपका नहीं मजा वही बोल रहा है, इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है. I'll name the number 1 band. Give me 1 second. मेरा लाइब्रेरी देखना पड़ेगा. इतना नहीं तो मजा नहीं है, तो मजा नहीं है. Oh yeah, I'm so sorry. याद आ गया. कोई नाराज नहीं होगा सर. हाँ, आपका पर्सनल 3 है. No, imagine like a band calling me up, you did not name me. One band that makes me feel very light, जब मैं वॉक करने आता हूँ कभी-कभी, and if I'm very stressed out ना, मैं क्या करता हूँ, मैं मेरा ईयरफोन्स डाल देता हूँ नॉइज कैंसलेशन पे, and I listen to this particular band called System of a Down. Great. कोई भी सुनता है, किसी नए इंसान को सुनाता हूँ, वो बोलता है भाई माफ करो मेरे को, नहीं सुना मेरे से. और होता क्या पता, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, जिनको सुना है ना, 2 टाइप के लोग हैं. एक वो जो लाइफ में कभी इसको वापस नहीं सुनेंगे, और दूसरे वो जो लाइफ में उसके सिवाय कुछ नहीं सुनेंगे. ये वो, लेकिन कुछ मेरे थर्ड जैसे भी होते हैं, बैंड है जैसे पिंक फ्लॉयड है. हाँ, बहुत मतलब ये मास्टर क्लास बैंड है.
मतलब अगर टॉप 1 पे बोले तो टॉप 1 वही है, वही पिंक बस फ्लॉयड उनका जॉनर अलग अलग है। Yeah. फिर लेड जेपलिन। नहीं, इसलिए मैं बोला टॉप 3 आपके हिसाब से, आपके पर्सनल चॉइस के हिसाब से। एक दिन आपको एक पॉडकास्ट ऐसा रखना पड़ेगा जिसमें हम आके कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ बैंड्स के नाम बैंड ना discuss ना करेंगे, ना बैंड वाह, discuss करेंगे। ये बस उतना ही करना पड़ेगा। उसमें आपको कम से कम 2 से 3 घंटा कम से कम लगेगा। चलेगा, हम लोग को एपिसोड मिलना चाहिए And बस। just not to forget, being an Indian, I appreciate 2 bands which I have heard personally, and अभी वो एक बैंड तो अभी डिसबैंड हो गया है, which is the local train. द लोकल ट्रेन, यस। Amazing, ना चोलो। Have you वो बंदे। अभी Have you heard Greece and the Chronicles? No, I haven't. लोकल It's an इंडियन yeah, it's an इंडियन Indian band, बैंड। yeah. ओह, And another band that I heard. sorry. I'm sorry. Another Indian band is Nalayak. नालायक। Yeah, बाबरा। पेरेंट्स ने बोला होगा तुम नालायक हो, बोला चलो नालायक बैंड का ही नाम रखते हैं। नहीं, great. अमेजिंग म्यूजिक, दे ऑल आर इंस्पायर्ड बाय रॉक ओनली। मतलब उनका कैसा है, वो सोलो है, रिफ है, वो, acoustic, हाँ, सब सब कुछ अच्छा है। These all bands are performing Bloodywood. They are performing ब्लडी overseas. Bloody वुड, Wood, कैसे oh, भूल सकते हैं? beautiful. ब्लडी वुड को कैसे भूल They are सकते so हैं? talented band. They are Sorry. performing overseas. They are यस performing यस, overseas. अरे वो सबसे बड़ा रॉक फेस्टिवल दे परफॉर्म्ड हिम। Don't forget Indian Ocean, man. इंडियन Indian ओशन। Ocean, परिक्रमा, these are old bands. देयर वाज अ फेज ऑफ माइन जहाँ पे बैठ के मैं सिर्फ ब्लडी वुड सुन रहा था। Bloodywood. I understand that phase of life. New time or new age bands. मजा आता ब्लडी वुड। शाउट आउट, ग्रेट बैंड मेरे को बहुत पसंद है। चलो, ऑन दैट नोट, थैंक यू फॉर कमिंग। Thank you so much for really inviting us, and we hope that this rock music thing is ये endless है, just like your दिस वाज जस्ट अ गेटवे। yeah, rock music is endless, just like your problems. बहुत ज्यादा रिलेटेबल कर दिया। And just like politics also, complex है वो। बट चलो, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही मजा आया कॉन्वर्सेशन के लिए। ये देखो पुरस्कार लेते हुए। रॉक म्यूजिक का ऐसा है ना सिद्धार्थ भाई, सिलवासा जैसी इंडस्ट्रियल टाउन, छोटा सा टाउन है सिलवासा, बहुत लोगों को पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं। तो आपका जो मीडिया है वो काफी हेल्पफुल रहेगा, मुझे लगता है। यंग लड़के हैं जितने भी नए We musicians have हैं। high hopes from KAVOD Media, okay? और ऐसे कोई इवेंट्स हो जहाँ पे लोग खाली बैठे 20-30 लोग और सुने यस, गुड म्यूजिक, ऐसी जगह हो। जैसे अभी नए ऑडिटोरियम्स बने, Yes, होप समडे जेम्स सर विल हैव अ स्मॉल परफॉर्मेंस ओवर देयर और वहाँ पे एक सेशन हो। यस श्योर। मेरा इस पॉडकास्ट स्टार्ट करने का मन ये, मतलब मेरा मेन इंटेंशन यही था कि माइंड मिक्स पॉडकास्ट, वी आर मिक्सिंग आवर माइंड्स एंड क्रिएटिंग समथिंग डिफरेंट। And you know, as you tell people ना कि भाई तुम तो रॉक कर दिए स्टेज पे, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, वो पोइट्री रेसिटेशन के लिए क्यों ना गया हो, you rock man. So how come that come? One line that all legendary musicians have said, and he'll agree with me, you'll agree with me, Christy behind the scenes will agree with me: rock and roll will never die. Never die. True. It will never die. It will come back in some form, but you'll always have a guitar in your hand on somebody's wall and in a cafe. Guitar is never going to get old. It's never going to fade away. Yes, And hats off to a person who has inspired me a lot. I read his books. Mentioning this, Mr. Siddharth Kadadi, founder of a band Zagnema, a very heavy metal band in Mumbai, playing across different countries and doing good. If you ever get a chance to see them, please do attend them. चलो, Thank you very much. सिलवासा And by I had the privilege of having him at my academy. He's also one of the academic consultants of Trinity College. Trinity London. College. So we had him on the same day when the PM Sir has visited here on 25th April. So we conducted a workshop for my students, and having him here, people probably don't know him here in Silvassa, but I consider him a celebrity because he is very well reputed, and the kind of stuff that he gives you when it comes to music and all knowledge is amazing. I've read his books, and that's how the theory came in. Even before I met him, I knew his books. And one fine day, I just inquired for a music exam, and they gave me his number, and I got the opportunity to connect with him. And hats off to this man. I'm technically into guitaring because of him. So virtually, technically, my guru. Yes. Thank you very much, everybody. चलो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। और ऐसे और एक्साइटिंग पॉडकास्ट I would like to call the person behind the scenes यार, जरा आके शक्ल दिखा के जाओ यार, आना पड़ेगा ऐसे, शर्मा नहीं। वो नहीं आएंगे। मैं The what do you call? क्या बोल सकते हैं इसको? द हैंडलर ऑफ दिस पॉडकास्ट। अरे I'll give you my अरे अभी कुर्सी का लालच नहीं है हमें, अब ले लो। कोई नहीं, लेकिन वो क्रिस्टी भाई के साथ भी हमारा पॉडकास्ट होने वाला है। क्रिस्टी भाई इज अ मिस्ट्री जो आपको बहुत टाइम बाद पर, क्योंकि हर पॉडकास्ट में क्रिस्टी भाई का मेंशन हुआ है। Exactly. CEO of KAVOD Media. क्रिस्टी भाई का अब फेस रिवील होगा। क्रिस्टी भाई का फेस रिवील होगा एक बड़े एपिसोड में, ठीक है? उनके लिए हम लोग स्पेशल एक पॉडकास्ट रखेंगे, Who is Christy? हु इज क्रिस्टी?
What is he? What is it? Thank चलो you, चलो, good ऑन night, डेट नोट, everybody. थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन. बहुत ही मजा आया आप लोगों के साथ कॉन्वर्जेशन करने में. बहुत कुछ मतलब ऐसे इंसाइट्स मिले, फन, इंटरेस्टिंग, सीरियस, एंड दैट इज व्हाट दिस पॉडकास्ट इज फॉर. एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. आई होप आप लोगों को पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा. Much more to come. यस, मच मोर टू कम फॉर श्योर. एंड सब्सक्राइब, लाइक जो भी है. एंड सादिक भाई के, जेम्स सर के, सबके Instagram handles and everything will be linked down in the description. So chalo, thank you very much once again. Bye bye, take care.